and welcome to today's session. Today, I think day 6 for this series. Hello, everyone. So let's start this day with the array. Before starting, I would like to tell you some of the things which we are going to do from now. As many of you understand the basics, so from today itself, what we are going to do is it's a surprise for you, all the live attendees, those who are attending daily the session. Okay, this is a surprise for you guys. Every day we will share 2 to 3 question or 5 question. Okay, and these questions will be helpful for you to understand the concept really well. And these all the questions will be shared to live attendees only. We will take all the doubts of live attendees only on the behalf of these questions, because those who are attending live and daily, they I think they doesn't have any problem till now. But if they have any doubts or problem in these questions, we will help them to solving these questions. Second thing is that we will organize a codathon for you guys, where top performers will get the goodies from Pep Bites, where top performers will be gifted some of the swags from Dot Question Mark as well. So guys, these questions are very beneficial for your placement, for the codathon, and for upcoming coding competitions. So I think you got the importance of these questions, and let's start this session with a wonderful Also hope. regarding yesterday's form, some of the people have filled the incorrect responses. They have uploaded some of the random files or random images. So please do not do that. Okay, so I think yesterday we got one boy. I think Kshitij will surely share his details. He compiled code on their mobile and share the screenshot. We appreciate their efforts, and I would like कि Kshitij should tell about him. It was great. Second thing is that कि चलो शुरू करते हैं. Let's start this series with a very good hope. Thank you each and every organization, those who are putting the efforts in this particular again in this initiative. So thanks all. So let's start with the series. If anyone have any doubt, they can ping in the comment section. We will surely help happy to help you out, guys. Thank you very much. Let's start with the series. So Dibbe song? Okay. तो I think आज शुरू करते हैं अपन एरेज से. अभी तक हमने क्या देखा है कि एरेज जैसी चीज होती है, मतलब एरे तो अभी हमने देखा ही नहीं है. तो आज एक नया टॉपिक है एरे का. अभी तक हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे. वेरिएबल्स वर देयर इन द प्रोग्राम, जिसकी वजह से हम कोई भी अपना 1 मिनट आई थिंक. ओके, टेल अस समथिंग अबाउट नेस्टेड लूप्स और इनफाइनाइट लूप्स. आज का जो टॉपिक है, दे विल ऑटोमेटिकली कवर लूप्स. तो अभी लूप्स के बारे में टेंशन लेना छोड़ो, लूप्स ऑटोमेटिकली आज के टॉपिक में कवर हो जाएंगे. देयर इज नो इशू विद लूप्स. ओके, कैन यू प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर? ओके, Selena, wait a minute, let me check. Let me check my audio. Am I clearly audible now? Yeah, yes you are. Okay. I am clearly audible now. And those who are facing issues with audio, they can please turn up their volume so audio will be clearly audible. अभी तक हमने क्या किया था, we work with variables. तो वेरिएबल्स में अभी अपने को मान लो, अपने को रोल नंबर स्टोर करना है. तो हमने एक वेरिएबल बनाया रोल 1. फिर हमने बना दिया एक वेरिएबल अलग से रोल 2. ऐसे अब अपने को बहुत सारे रोल नंबर स्टोर करना है. लेट अस थिंक वी हैव टू स्टोर 54,000 रोल नंबर. तो आप क्या करोगे? विल यू क्रिएट 54,000 वेरिएबल्स? 54,000 वेरिएबल्स, हाउ विल यू क्रिएट 54,000 वेरिएबल्स? इतना तो टाइम ही कोडिंग करने में ही निकल जाएगा अगर हम 54,000 वेरिएबल डिक्लेयर करने लग गए तो. This was a very difficult thing with the programmers. So how to work with multiple arrays? और एक प्रोग्राम बनाओगे that will not be for a single individual. वहाँ पे multiple individuals तो आएंगे ही आएंगे. तो अब इसके लिए हमने हमारी C++ से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. तो उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं. अब हमारा कॉन्सेप्ट आया एरेज का. What we do in arrays, we create a block. अब ये ब्लॉक था, इसके अंदर मैंने ब्लॉक्स बना दिया. इसके अंदर 1 2 3 4 हमारे बहुत सारी वैल्यूज स्टोर्ड है, और ये ऐसे कर करके n तक वैल्यू हो सकती है. n इज a यूजर डिफाइंड वेरिएबल. 1 से लेके 2 3
4 5 ऐसे up to n variables stored हैं. If my my voice is low, let me speak a little bit louder. Is my voice clear now? Is my voice clear now? Please chat in the comment section. तो Yes, अब yes, I think. ओके तो अभी हमने क्या किया था, हमने नॉर्मल वेरिएबल्स वी हैव डिस्कस किया. अब हम एरे पे काम कर रहे हैं. एरे में हम मल्टीपल वेरिएबल्स स्टोर कर रहे हैं. मल्टीपल ओके आई थिंक देयर माइट बी नो noise, background noise now, because some of the other participants had their mic open. Yes, we will discuss about oops and its concept. तो अब हमने क्या किया, हमने एरेज बना दिए और हम एरे के अंदर वैल्यूज एक्सेस कर रहे हैं. और हमारी जो एरे के अंदर वैल्यू शुरू होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, then 1, then 2, then 3, then 4, and up to the nth variable is accessed using n minus 1 index. तो ये हमारे ना एरे के अंदर अलग अलग ना इंडेक्स होते हैं. हमको कोई भी वैल्यू एक्सेस कैसे करनी है, हमको कैसे पता चलेगा, वी विल गेट टू नो द वैल्यू थ्रू इट इंडेक्स. तो एरे अपना काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस. अब इंडेक्सेस के बेस पे तो एरे काम करता है. इंडेक्स एरे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स. अब इंडेक्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, हमने बहुत सारे एलिमेंट्स बना लिए. तो इससे हमको व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम क्रिएटिंग एन एरे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एरे के अंदर हमारी जो मेमोरी एलोकेटेड होगी दैट इज कॉन्टिग्यूअस. तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है हमारे एरे में. तो द मेमोरी एलोकेटेड विल बी कंटिन्यूअस. कि ऐसा नहीं होगा कि इस ब्लॉक के बाद कोई और ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बाद यही ब्लॉक होगा, उसके बाद यही ब्लॉक होगा. तो एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स इज इजियर क्योंकि हमारी मेमोरी कॉन्टिग्यूअस होती है. अब हम जैसे मान लो कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n1, तो ऐसा हो सकता है कि n1 इधर डिक्लेयर्ड हो, फिर बीच में कुछ गार्बेज स्पेस अवेलेबल हो, फिर इधर जाके हमारा n2 डिक्लेयर्ड हो. तो हमारी मेमोरी वेरिएबल्स के उसमें कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है. देयर कैन बी सम ऑफ द डिफरेंस. एंड व्हाई एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, देयर इज अ क्वेश्चन बाय नंदिनी. तो एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है बिकॉज इट इज प्रोग्राम सच वे इन C++. और वो प्रोग्राम क्यों किया गया वो चीज़ तो हम नहीं बता सकते, बट हमारे में ना दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग और एक वन बेस्ड इंडेक्सिंग. तो जो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है दैट स्टार्ट विद 0 टू n-1, और जो वन बेस्ड इंडेक्सिंग होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n. तो हम एरे का फर्स्ट एलिमेंट जब हम एक्सेस करते हैं दैट विल बी एक्सेस फ्रॉम इंडेक्स 0, और जो लास्ट एलिमेंट हमारा एक्सेस होगा दैट विल बी एक्सेस फ्रॉम इंडेक्स n-1. तो ये था हमारा एरे का कॉन्सेप्ट. नाउ लेट अस सी कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे. तो हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और हम सीधा कोडिंग के साथ ही समझते हैं. Let it open. तो हम एरे को अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, इसमें सबको आइडिया होगा. हैशटैग इंक्लूड ISP and return 0. अब हमको एरे डिक्लेयर करना है. वी हैव टू डिक्लेयर एन एरे. तो एरे डिक्लेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको बताना पड़ेगा डेटा टाइप. आफ्टर डेटा टाइप द एरे नेम एंड देन इन द स्क्वायर ब्रैकेट एरे टाइप. ठीक है, ये हमारा एरे डिक्लेयर हो गया. इस तरह से वी विल डिक्लेयर आवर एरे. अब हमने एरे डिक्लेयर कर दिया. चलो एक हम एरे डिक्लेयर करते हैं int ARR 5. तो अब इसने क्या किया,
मेरे को एक इंटीजर टाइप का 5 साइज का एरे दे दिया। It becomes easy to calculate memory index in case if you start taking. Yes, it becomes easy to access the memory. और ऐसा कुछ नहीं, हम वन इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो that does not make an issue. तो हमारा जो इस एरे का इंडेक्स होगा that will be 0, 1, 2, 3 and 4. मतलब 0 to n-1 हमारा एरे का इंडेक्स होगा। अब हमने नेक्स्ट चीज क्या करी, हमको एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो एरे के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो ARR ऑफ 0। तो जब हमारा ARR ऑफ 0 होगा वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। हमने इसके में वैल्यू डाल दी जैसे 15। फिर मैंने क्या किया, ARR ऑफ 1 के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 16। ARR ऑफ 2 के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 17। ARR ऑफ 3 के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 18 और ARR ऑफ 4 के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 19। अब मेरे को एरे के एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं फ्रॉम ARR 0 टू ARR 4। तो हम इस चीज को कैसे करेंगे, ARR 0 टू ARR 4 की वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है। तो आई थिंक कल लूप का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। तो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप टू आइटरेट ओवर द एरे। तो हम एरे को आइटरेट कैसे करेंगे लूप से, किसी को अगर आइडिया हो तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। We will explain again on side Carol. So when we use it, Muskan, so no issue with that. तो जिसको भी आइडिया है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करो। तो हम फोर लूप लगा रहे हैं, विशाल ने जैसे बोला। तो फोर लूप में हम क्या लिखेंगे कि हमको एरे के एलिमेंट सक्सेस होते हैं। व्हाट विल बी द इनसाइड द फोर लूप, हाउ विल वी एक्सेस। तो इनसाइडर बताओ ना। ओके, सर्वथी पाटिल का आंसर बिल्कुल ठीक है। फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, I is less than 5 and I plus 4। अब हमने क्या करा, इसके अंदर हमने प्रिंट करवाना है एरे का एलिमेंट। तो वी विल यूज सी आउट ARR ऑफ I। अब हमने ARR ऑफ I क्यों यूज किया, व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग एल्स। हमने ARR ऑफ I इसलिए यूज किया क्योंकि हमने I को तो 0 से लेके 5 तक यहाँ पे आइटरेट कर ही दिया था। तो जो 0 से 5 यहाँ पे आइटरेट होगा उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं ताकि आइडिया रहे, और इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन दे देते हैं। ये था हमारा एरे को प्रिंट करवा दिया। नाउ लेट अस सी A5 plus plus। Let's wait for the code to compile। तो हमारे 15, 16, 17, 18, 19 एलिमेंट्स आ गए हैं। ओके, अब मेरे को ये पूरा का पूरा एरे बाद में इनिशियलाइज करना पड़ा, तो मेरे को इतना सारा लिखना पड़ा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे को इनिशियलाइज पहले से ही करना है तो व्हाई नॉट इनिशियलाइज इट हियर ओनली। जैसे हम क्या करते थे, हमने एक वेरिएबल लिखते थे int a is equal to 5। तो ये यहीं पे ही इनिशियलाइज हो जाता था, int a is equal to 5। अब हमको एरे को ही इनिशियलाइज करना है। तो एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, int arr 1 और 5 साइज इज इक्वल टू। अब हम विल यूज कर्ली ब्रेसेस है और हम यहीं पे वैल्यू डाल देंगे 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो व्हाट हैपेंस नाउ कि अब ये इसी टाइम इनिशियलाइज हो गया है। ओके, व्हाट इज कॉन्सेप्ट वेरिएशन से please use English only. We are using combination of English and Hindi. I think that will be fine for everyone, so that the students who are using Hindi can also understand and who are using English can also understand. So we are here defining at the time of initialization. तो अब ये हमारा एरे एक्सेस हो गया है। तो लेट अस सी कि ARR1 और ARR में कोई डिफरेंस है कि नहीं। So I will copy the code and paste it again, और हम यहाँ पे ARR1 एक्सेस करते हैं।
तो हमारा ARR1 और ARR दे आर कम्प्लीटली सेम, बट वट इफ अब अगर मैं बोलता हूँ मेरे को तो शुरू के 3 एलिमेंट्स ही वो करने हैं, तो अब मैंने क्या किया, मैंने 15, 16, 17 ही इनिशियलाइज कर दिया, मैंने पूरा का पूरा साइज इनिशियलाइज ही नहीं किया। देन व्हाट इट विल डू, अब क्या दिक्कत आएगी, लेट अस सी कि अब क्या दिक्कत आएगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसी को दोबारा से प्रिंट करते हैं फुल एरे को। तो हमने क्या किया, ARR2 को हमने प्रिंट करवा दिया। Okay, I have used ARR1 again. I think I have to change to ARR2. Okay, now it is fine. तो अब हमारा क्या हुआ है, जितने हमने एलिमेंट्स इनिशियलाइज करे दे आर एक्सेसिबल, बट अदर एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज जीरो। तो मतलब if we initialize some of the elements and we leave others, so they will be automatically initialized to zero. पर अगर हम सिंपल एक एरे डिक्लेयर करते हैं देन इट विल कंटेन गार्बेज वैल्यू ओनली। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एरे ही बनाना है विच इज ऑल जीरो एलिमेंट्स। तो ऑल जीरो एलिमेंट्स का एरे बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, एरे ऑफ 5 is equal to, and I will leave it blank. If I leave it blank, we will have an array which is of zero element. It will not be empty, it will be of zero element, it will not point to any garbage value. और एक चीज और कि हम एक और चीज कर लेते हैं, ARR of 3, let us name it ARR of 3। अब हमने क्या किया, let us name it as ARR of 4, 17, 18, 19 and 20। अगर हमने साइज से ज्यादा एलिमेंट्स दे दिए देन इट विल रिजल्ट इन एरर। लेट अस सी बाय कंपाइलिंग द कोड। ये देखो, टू मैनी इनिशियलाइजर फॉर इंट 5। तो क्योंकि हमने ज्यादा एलिमेंट्स दे दिए, ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर ही नहीं कर सकता है, फॉर दैट वी नीड टू इंक्रीज द साइज, और साइज इंक्रीज करने के बाद से ज्यादा स्टोर कर भी सकता है। और लेट अस सी कि ARR सी में भी हमारा क्या स्टोर था, मैंने बोला यहाँ पे जीरो एलिमेंट था, ऑटोमेटिकली सारे जीरो आ जाएंगे। तो लेट अस सी सब जीरो आ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली चेंज टू जीरो। अब हमने क्या करना है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इसको देखते हैं। अब हमने क्या किया, वी हैव इनिशियलाइज्ड ऑल द एरे एलिमेंट्स हियर ओनली। अब मेरे को एक एरे बनाना है, मैंने ARR ऑफ 3 ले लिया। अब ARR3 के अंदर आई वांट द यूजर टू एंटर द वैल्यू। तो अब मेरे को यूजर से वैल्यू एंटर करवानी है, तो इसके लिए भी मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूँ टू ask the user to enter the value. So let us see how we will use for loop to ask the user to enter the value. I is less than, I think ARR c dot size function is also available. So let us discuss this sometime later. अब we have accessed the element from 0 to 5. Now what I will do, I will use a C in operator and I will use the ARR3 of I to ask the user to input the value. C out, let us see out here. Enter 5 value for array. Now what it will do, it will ask the user to enter the value and then it will initialize the array. Let us see it in action. अब enter 5 values for array, जैसे मैंने enter 2.2 7 8 4, तो an array will be initialized। तो अब हमने क्या किया, हमने एरे के अंदर अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट तरीके से वैल्यूज लेके देख लिए।
तो एरे के अंदर हम इस तरह से वैल्यूज, हम एक एरे क्रिएट इस तरह से कर सकते हैं, और एरे को अगर हमको इनिशियलाइज करना हो तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट मेथड, और उसके अंदर हम अपना यूजर डिफाइंड वैल्यूज भी इनपुट करवा सकते हैं। तो एरे तो एक्सेस हो गया अब हमारा। लेट अस नाउ प्रोसीड विद सम ऑफ द क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं एरे से रिलेटेड। तो दिव्यसोम, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर सम ऑफ द क्वेश्चन। Yep. Hello. Am I audible? Yes, you are audible. You can start sharing your screen. Okay, sure. So is my screen readable, or should I zoom in more? I think your screen is readable. You can continue with it. Okay, cool. So guys, we just saw how to input an array from the user. And guys, till now, anyone has any doubt regarding arrays, or we can proceed with the question. Okay, I'm going to assume there are no doubts. So, to start working on an array, first let's input an array. So till now we saw that we were hard coding the length of an array, and then we were fetching the values from the user. Now let's grab entire array from the user, and this is what you're going to do in computative programming. So first of all, let's grab a size. So I'll say I'll declare a variable int n, and I'll say cout size of array. And with that being done, I will take that input from the user and assign it to variable n. After that, I'll initialize my array with the size n that I've just used, that I just fetched from the user. So I'll say int array n, and with that being done, I will now proceed to take the values from the user. So I'll say drop all array values in space. This is just sometimes makes the user more interactive, so you can just say drop the values in space separated format, and what that will do is will give the user an idea of how to get the values. So what I'll do now is I'll of course initialize an array, initialize my for loop from 0 to n, because just now we have fetched that our array will be having n values. So in my for loop, the loop control variable should work from 0, because array indexing starts from 0 to n. And I'm using less than n, of course, because that is the maximum size of my array. And with that, I use I++. Okay, so guys, here's the thing. When in this type of questions, जब आपको directly user से value मिल रही है that there are going to be n number of values, it's okay. This technique works. You can directly use for loop for that. I mean, inside for loop, you can directly use n as your bounding integer, as your maximum size. But what about when you don't know कि आपकी array में कितनी values है? Or what about you want to make it dynamic? आपने पहले array initialize कर लिया and then आप size calculate करना चाहते हो. For example, let me give you a situation. What if I would have done something like this? Unknown size. So what I'll do here is मैं एक array create करूँगा. I will not specify the size here. I'll directly say some random values. And now we are looking at the array, so we know कि we हम count कर सकते हैं कितनी values है. But what if you directly want to calculate it within the code? You don't want to hard code this. I mean, मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता size is equal to 7. Don't want to hard code it. I want to calculate it in my code. So guys, आपको याद होगा during the second or third session we learned about a function size of. Remember, size of. आप size of के अंदर किसी का भी वेरिएबल का नाम लिखते हो या डेटा टाइप का नाम लिखते हो, it will give you an output of how much memory it is consuming. So यहीं पे if I write size of array, can someone tell me what is going to be the output? Can someone tell me what is going to be the output of this line? What is going to be the value of size? Can someone tell me that? So I'll comment out rest of the code. Let's just see what is going to be the output of size of n9.
7, 28. Okay, there is a battle between 7 and 28, and guys 28 is the correct answer क्योंकि size of हमें बताता है कितना memory ले रहा है ये variable in our in our computer. So let's test that out. Let's go to cd day 5, not practice, just day 5, and I'll say g++. The name of the code is arrayutility.cpp, and मैं यहीं पे run कर दूंगा, ठीक है, dot. So let's see the output. The output is 28. So guys, we know that our the size of the entire array is 28. But मुझे size से फर्क नहीं, मुझे memory से फर्क नहीं पड़ता, मुझे number of elements calculate करना है. So how will I do that? I will just divide that by array of 0. Not exactly array of 0, size of array of 0. Make sense? Does this make sense to all of you? Type yo in the chat if this makes sense to you. We just calculated the size of array and we divided it by the size of first element. So the first element is obviously an integer, and आपको पता है array में पूरी all the elements are of same data type. So if we divide it by the first element, it will divide it actually by the size of the data type जिस type का वो array है. So this will give us 28. हमने अभी output देखा first section. This will give me 4 because that is the size of int, and if we divide that, we will get the number of elements in an array. So let's test that out. And just like that, we calculated the size of array. So that is another way. And assuming that all of us are clear here, okay, there's a question, but this won't for string, right? Yeah, this will not work for string because string के अंदर अपनी internal method होती है dot length to calculate that. And if you are treating a string as an array of characters, then this method will work. So let's come back to our original code. And in our original code, what we are doing here is हमें एक variable लिया था input from the user. Then we calculated the initialize an array of that size, and अभी हमें user से input लेना है. So I'll just say in arr of 5. ठीक है. And इस point पे we have an entire array from the user with a user defined size. So now what I want to do is I want to calculate the sum of all the elements in my array. We'll do some basic stuff and then we'll do a very interesting question. You will be shocked that just in 5 days of CPP we are able to solve this question. I assure you that all of us can solve that. So let's calculate the sum. Now the way we do that, of course, हमें हर एक element का sum चाहिए. So I'll again do the same thing. Or let me just copy paste this. And inside the loop, what I'll do is I'll say sum plus is equal to arr of I, and of course I will have to define a variable sum, and sum is equal to 0. And what this will do is हमारे पास एक variable है initialize to 0, and guys we know why initialization is important, क्योंकि अगर I do not initialize it then sum will hold a garbage value. अगर हम यहाँ पे किसी uninitialized value में अगर हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं सेल्फ रिप्लेसमेंट वाली, प्लस इज इक्वल टू, which is actually equal to sum is equal to sum plus, both are same things. So if we do that in an uninitialized variable, it is going to cause an error that this variable is not initialized, or in some compilers it will work but with some random value. So to avoid all that mess, I'm using this. I'm initializing it with a value, and then normally I can add my stuff. So let's print that out. C out sum of array elements and I'll say my variable sum. Let's test that out. Size of array, I'll say 5. I'll drop 5 values. Okay, sorry about that. I gave a different value. 5, 4, 3, 2, 1. And the sum of my array is 15. So, okay, am I going fast? Okay, I'll try to reduce my pace. Divisam, you are fine. Not Okay, fast, thank you you. can continue. A bit. Okay, I'll reduce my pace a bit. You are So a guys, little bit faster.
Okay. So guys, anyone, any doubt till here? If there are no doubts, we are going to do some. We are going to solve one very cool question today. And Because there are comments from the audience also that your speed is fine and it becomes boring in the less speed. So please continue with the same speed. okay, And okay. So that there is a doubt: can we give negative values in the array? And if there are negative indexes in the array also, please also so comment. about negative index, that concept does not exist in C++. Okay, about negative values first. So about negative values in your array, of course, you can use negative values in an array because हमने data modifier के बारे में पढ़ा है, data type modifier. Since यहाँ पे मैंने int use करा है, it is completely legal. I mean, syntactically correct if I use negative values. But अगर मैं यहाँ पे unsigned int type की data type use करता हूँ, then I'm not okay. Again, my spelling is wrong. UNSIGNED. Yeah. So if I use unsigned data type here, so we know that जब हम unsigned कर देते हैं, then we can use all the bits in the memory, but we cannot store negative values. So if I do For this, then decimal value, sure you can use float or decimal type of data type, and you can store the decimal values as well. okay. So yeah, we know that array सिर्फ एक टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकती है. तो अगर आपको float यूज करना है, then you have to declare a different array. And with unsigned and signed, by default everything is signed, so positive and negative values दोनों use कर सकते हो. But if you declare specifically unsigned, then सिर्फ positive value store कर सकता है. So with that being done, let's use some inbuilt methods from different libraries. सिर्फ एक particular method के बारे में बात करेंगे, with which we can sort our array. About the different algorithms of sorting, we'll learn that in details when we go to DSA. But for now, let's implement an inbuilt library and sort our array. तो उसके लिए सबसे पहला चेंज मैं ये करूंगा. I'll just instead of using iostream, I'll just say here bits stdc++.h. And guys, this is nothing. This library, what this library does is, you can think of this like the Godfather library. What this library does is it imports most of the usable libraries that you will ever need into your C++ code. So you don't ever have to worry ki yaar, if I'm using this, what if there comes an array, error that this is not defined or that is not defined. Bas isko import kar do. It basically imports all the usable things that you will need. So फर्स्ट इसको यूज करना, इसको चेंज करो अपने कोड में, एंड देन लेट्स सॉर्ट आवर एरे. सो द वे यू डू दैट इज वेरी इजी. लेट्स सॉर्ट आवर एरे. व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट से सॉर्ट, एज सिंपल एज दैट. मैं सिर्फ सॉर्ट लिखूंगा. नाउ सॉर्ट इज गोइंग टू टेक 3 इनपुट्स. Dibyasam, Dibyasam, या sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you. Can I? Okay. तो दिव्यसम प्लीज एक क्वेरी आ रही है. कैन यू रिपीट 2 मिनट कॉन्सेप्ट जो अभी पहले कराया था उसे 2 मिनट में रिपीट कर सकते हो? कैन यू रिपीट दैट? या श्योर, मतलब ऑफ कैन यू कोर्स. रिवाइज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बिकॉज सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइन नाउ, तो थोड़ा सा उन्हें हो रहा है. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. इट विल बी ग्रेट. उनके लिए रिवीजन हो जाएगा जिन्होंने कर लिया है, क्योंकि अभी जब हम कोडिंग क्वेश्चन पे जाएंगे ना, कोडिंग पार्ट पे जाएंगे, दैट विल बी मोर रिग्रेस फॉर देम. तो इसलिए अगर रिवीजन हो जाएगा तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर देम. तो Okay, प्लीज. so let's do a quick recap. So guys, what we are doing here is we know what is an array. Array basically a contiguous memory allocation, data type which is having a contiguous allocation. And why contiguous? We'll learn that in details जब हम pointers use करेंगे. Basically with pointers आप memory level पे access कर सकते हो. So with contiguous allocation, this makes sure that पूरी array की जो block है ना, let's say your array has n elements, then entire n elements will be declared in one single space, so that जब आप मेमोरी के थ्रू एक्सेस करते हो, यू कैन ट्रैवल थ्रू द एंटायर एरे सीमलेसली, नो प्रॉब्लम. अब ये नाउ थिंक अबाउट कि आपकी एरे की पहले 2 एलिमेंट कहीं पे है, दूसरी 2 एलिमेंट और कहीं पे, बाकी के सब और कहीं पे. नाउ जब आप मेमोरी के थ्रू एक्सेस करोगे, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, राइट? आप कंटिन्यूसली एक्सेस नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई योर एंटायर एरे इज declared in a single space. So do you want to verify? Do you want me to show you that contiguous memory allocation? Okay, that's also a question. So guys, I'll give you a Dibyasam, very we quick will demonstration. cover that in the
pointer section, please don't show about the continuous memory allocation as of now. We will show it in the uh, section, pointer section. Okay, okay. So we'll think about what are contiguous. I'm telling contiguous, not continuous. They are slightly different, and we are going to cover pointers in a day or two. So stay tuned for that. Now, what I'll do here is I'll quickly recap array क्या होती है. Basically, this is how declare an array. This is called declaration. And with that being done, this tells the compiler that this variable ARR or whatever variable name you use can be used as an array, and it can store multiple values of this particular data type. So your array data type is always homogeneous. हमेशा एक data value ही store कर सकता है data type. And then this technique of using square brackets next to it, it is called subscripts. Now within subscripts आप जो भी index provide करोगे starting from 0, there are no negative indexes. Negative indices are supported in Python, not in C++, not yet. So within negative index आप जो भी value use करोगे, that particular value आपकी array में उस particular address पे जो value होगी वो show हो जाएगी. So that is the basic concept of array. And now let's move to the cool stuff. Let's say we have an array जो कि हमने already कर लिया है in ARR with this few lines of code. And what I'm going to do now is I'm going to sort that entire array into ascending order. So before doing that, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको एक बार array का display दिखा देता हूँ कि array में क्या क्या values हैं. So I'll say cout ARR of I and some space. Yeah, someone in the doubt was asking if we can use \t here. Of course we can use that. थोड़ा ज़्यादा space आ जाएगा. Let's run our code. And I will use, let's say, 5 values. I'll say random values. So guys, basically we are having 5 values in our array, and up till here it's working fine, and we are also calculating the sum of our elements. Any doubts till here, or we can move forward? Okay, Jyoti is asking, can we include IOStream and bits STDC library in the same line? Jyoti, you don't need to import IOStream if you are importing this library, because as the comment says, Godfather, this library actually imports every library of C++. तो आपको कभी और कोई library use करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. This is one line solution to all libraries. Okay, so let's move forward. Let's sort our array. So to sort the array, what I'll do here is, guys, just to be on the same page again, sort use करने के लिए पहले ये library change कर लो. IOStream में नहीं defined होती sort value, and let's go on. So for sorting, I'll first of all define कि मेरी कौन सी array को sort करनी है. So it is of course ARR, because हमने उसी में सारे value store करी है. After that you have to tell कि array की कौन सी value तक sorting करनी है. That value plus 1, that value plus 1. So what I'll do here is I'll say array plus n, and we already know कि हमारी array में total 0 से लेके n values हैं. So यहाँ पे मैं mention करूँगा ARR plus n. It means पूरी array sort होने वाली है. And let's check that out. अगर यहाँ पे sorting हो रही है तो मैं पे checking के लिए क्या करूँगा, हमने ऊपर sum के लिए जो loop लिखा था इसको मैं नीचे ले आऊँगा, somewhere here. So I'll execute the code, and let's check if our array is sorted. So let's run the code, and again size is same. I'll define some random values, and see the entire array is sorted. 4 5 6 7 8. मैंने input दिया था 8 7 6 5 4. So guys, does this make sense? Everyone clear deal here? How to sort all the elements of your array with single line and an inbuilt function. Sort array plus n. Now let's assume, okay, I'll wait for doubts here in a while. Why array plus n? Okay sir. So guys, यहाँ पे क्या हो रहा है? So guys, instead of explaining what I'll do here, I'll give you another example. Array of n मैं पे क्यों लिख रहा हूँ? Because मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी पूरी array sort करनी है.
क्योंकि कभी आपको नीड पड़ सकती है कि आपको सिर्फ एरे का फर्स्ट हाफ सॉर्ट करना है और बाकी के एलिमेंट सॉर्ट नहीं करने हैं. इन दैट केस दिस सिंटैक्स इज गोइंग टू हेल्प यू. जब मैं लिखता हूँ एरे प्लस एन, बिकॉज मुझे पता है मेरे एरे में टोटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसके मैंने सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करने बोल दिया. व्हाट इफ मैं सिर्फ चाहता हूँ मेरे एरे की आधी एलिमेंट सॉर्ट हो, देन आई विल यूज n by 2 एंड सी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक. अब मैं कोड एग्जीक्यूट करूंगा and I'll import 54321, and if I now run the code you will see the entire array is not sorted, only the first two values, because 5 by 2, you know, हमने n by 2 लिखा था, so 5 by 2 is 2. I mean it is 2.5 but सिर्फ integer part को consider कर रहे हैं. So सिर्फ देखना पहले के दो एलिमेंट सॉर्ट हुए हैं 4 and 5 and 3 to 1 as it is print to n. Now it might look little confusing, so we'll again come back to n by just n. ठीक है, अब मैं पूरा array sort करूंगा, and if I run the code again with the same input 5 4 3 2 1, now see my entire array is sorted. So guys basically ये n क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट आप जो इनपुट देते हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपको जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है उस वैल्यू को n बोलते हैं. सो अगर मेरे को पूरी 5 की 5 एलिमेंट सॉर्ट करनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन आई विल मेंशन हियर ARR plus n. दिस विल मेक श्योर दैट ऑल द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड. So if I say here ARR plus 4, this will make sure that only elements at index 0 1 2 3 are sorted. So that is why we write ARR and ARR plus n. So does this make sense to you, or any doubts till here? User defined. What is user defined? How to sort in the right part only. Okay, now that what does the type? What does type of sorting this? I didn't get the question. What does type of sorting this? Okay, if you're asking what type of sorting this is, the algorithm internally it is merge sort, but sometimes it also uses in case of user-defined functions, classes. जब हम उसमें पढ़ेंगे, it also uses quick sort with two pivots. That is something we'll discuss in details in DSA. Those are internal algorithms, but अभी हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमारे लिए काम कर रहा है, सो वी डोंट रियली नीड टू नो कि वो इंटरनली कैसे सॉर्ट करा. दैट इज बिट कॉम्प्लेक्स. सो गाइस यहाँ तक अगर सबको क्लियर है, कैन वी मूव टू अ क्वेश्चन. व्हाट इफ वी वांट टू सॉर्ट लाइक दिस? ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कोई पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करना है. सो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज चेंज करना है. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट ग्रेटर. ठीक है, you have to write greater, and within arrow brackets you have to say the data type of your array. Since हमने यहाँ पे array of type ये रहा, हमने type integer लिया है, so what I will do is मैं पे लिखूंगा greater, and then within arrow brackets I'll say int, and then I'll use common brackets. This is the syntax. अगर आपको descending order में use करना है, आपको कुछ ऐसे लिखना है. Now don't worry about array brackets and why this empty bracket. इसको template बोलते हैं. ये भी हम बहुत details में पढ़ेंगे. For now I'm showing you the syntax of sorting. Sorting में कैसे कैसे ascending और descending outputs ले सकते हैं. So let's run the code now. And अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5. Sorry, size of array it's going to be 5. I'll use 5 6 7 8 9. 5 values है ना, 1 2 3 4 5. Okay, so now you can see my entire array is sorted in descending order. Okay, so I guess that makes sense. And guys, अभी हमने सिर्फ 5 days पढ़ा है CPP, right? So what if I tell you हम Google के coding competition का question solve कर सकते हैं? Will you believe me? Or let's move to the question and solve it together. What do you say? तो यार जिसको भी अगर कोई टॉपिक्स में डाउट आ रहे हैं तो इट इज लेस टाइम. तो मेरे पास सिर्फ 15 डेज है, तो अब टॉपिक दोबारा से रिवाइज नहीं करवाएंगे. प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट आते हैं देन प्लीज आस्क ऑन टेलीग्राम चैनल. आज योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड. पर बार बार एक ही वीडियो में टॉपिक रिवाइज करवाना विल नॉट बी पॉसिबल. Yeah, exactly. So Isha is asking what will be the result if we don't put any value instead of n. So I assume you are talking about this. अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, then basically it means सिर्फ first element को sort करो, and that won't make any sense, right? पहला element वैसे ही अपनी जगह पे वो क्या sort होगा. And so moving on to that,
एक गूगल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज, ठीक है। सो आई हैव माय गूगल क्रोम ओपन हियर, मैं ऐसे जाऊंगा एंड गाइस दिस इज अ गुड प्लेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस इफ यू आर इनटू कॉम्पिटिटिव कोडिंग। जस्ट टाइप गूगल किक स्टार्ट एंड आई गो टू अ क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इट केम लास्ट ईयर इन गूगल्स कोडिंग कॉम्पिटिशन, so I will go to try a past problem year 2020 and it came in round A. So let's go on to that, and this is the problem allocation. So let's solve that problem. Guys, this is the problem. Basically question क्या है कि you will be given an input Devasam, can n. you zoom in a bit of the question thing? The question is not Yeah. visible. So I guess that will be readable now. I've zoomed in a bit. Yes, that is readable. You can Okay, continue. thank you. So guys, basically question क्या है? You will be given n values, ठीक है? And all the n values you can store that in an array, and array का हर एक value basically आपको एक house की cost बता रही है, ठीक है? So there are n number of houses, and inside your array every element is telling you the cost of that house. So this is how competitive coding में आपको क्वेश्चन इनपुट मिलती है। आपको हम यहाँ पे जैसे ये मैसेजेस दे रहे थे, गिव मी द वैल्यू, ड्रॉप दीज वैल्यूज। अब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग जब करेंगे वी डोंट नीड टू राइट दैट वैल्यू, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इनपुट देके चेक करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ मोमेंट लेट्स फॉरगेट कि यहाँ पे टेस्ट केसेस बोला है, लेट्स सॉल्व द कोर क्वेश्चन। उसके बाद टेस्ट केसेस के लिए हम उसको नेस्टेड फॉर लूप यूज कर लेंगे। कमिंग टू दैट इन अ बिट। बेसिकली हमें दो वैल्यूज दी जाएंगे इनपुट में। एक वैल्यू n होगा दैट विल टेल अस कि हमारी एरे की साइज क्या है, एंड एक वैल्यू होगा b दैट विल टेल अस द बजट दैट वी हैव। अब क्वेश्चन है कि then second line contains n integers, and this is what we are going to store in an array, and every of these n values will be a house, the cost of buying a house. अब हमें करना क्या है? So for each test case, what we have to do is what is the maximum number of houses that you can buy. So let's see let's look at one of the input. So this is input 1, n की वैल्यू 3 है, सॉरी दिस इज टेस्ट केस, n की वैल्यू 4 है। सो यू हैव 4 ऑप्शंस टू बाय अ हाउस, and guys this is your budget, that is 100, the next value. So you have 4 options and you have rupees 100, and these are the prices of all the houses available. एक cost है 20, एक का cost है 90, एक 40, and then again a 90. Now your question is how many maximum number of houses that you can buy, calculate it. So can anyone tell me, अगर मेरे पास एक फिक्स बजट है, मेरे को पता है मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, तो मैं उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ सो दैट मेरे पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाउसेज हो? Can anyone tell me what should I do? मुझे सबसे एक्सपेंसिव हाउस पहले खरीदना चाहिए या सबसे चीपेस्ट हाउस सबसे पहले खरीदना चाहिए? Drop what you think in the comment section. Should I buy the cheapest house first or the costliest house first? चीपेस्ट, एग्जैक्टली। अगर मैं सबसे पहले सबसे चीपेस्ट हाउस खरीदता हूँ तो मेरे पास ज्यादा बजट बचेगा टू बाय द रेस्ट ऑफ द हाउसेस। सो लेट्स डू दैट। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक एरे है हम उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, राइट? यू ऑलरेडी नो दैट। सो आई move this question in a different code here and return 0. सो इसी टेस्ट केस में ना गाइस इनपुट लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनपुट में वैल्यू n लेनी है, वैल्यू b लेनी है। सो लेट्स डू दैट। int n and p, and I'll say c in n and p, and यहाँ पे guys आपको कोई मैसेज देने का जरूरत नहीं है कि okay, so that is the problem, hashtag was missing and guys the thing is कि यहाँ पे आपको ना आउटपुट नहीं देना कि drop this value in the terminal or drop that value. The computer will automatically feed an input and वो चेक कर लेगा, तो आपको सिर्फ वैल्यूज इनपुट लेनी है, ठीक है? And okay, I'll talk in English only. Okay. We So will talk about the time limit and all the DSA thing in the DSA code. First of all, yeah. you need to understand the basics. So please understand the basics and see if the code is working and how it is working. And Divyasan previously introduced the concept where we are testing for one input and let us give the homework to the audience Yeah, to exactly. make it a nested for loop. Yeah, you have to do it in nested for loop.
इसलिए मैंने यहाँ पे इनपुट t नहीं लिया, दैट वाज द फर्स्ट इनपुट. सो we'll talk about what is test case in a while. एक बार हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. So what I'll do here is मैंने दो values input ले लिया. Now I have the number of houses that are available to me and I have the variable b जहाँ पे मेरे पास मेरी fixed budget है, वो भी हमें input ही मिलेगा, ठीक है. हमें input में कुछ ऐसा मिलने वाला है 4 and 100. So अभी ये हमारे पास आ गया. अभी हमें n number of values array में store करनी है. So let's declare an array. Int arr. Okay guys, also one thing before you decide the data type जो आपको यूज करनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो लिमिट्स में या कहीं कहीं पे इसको कंस्ट्रेंट्स में लिखा रहता है. यहाँ पे मेंशन्ड है कि द एनी वैल्यू इनसाइड एरे जो मैं इनपुट में मिलेगा, इट्स साइज विल बी लेस देन 1000. सो ऑब्वियसली इंटीजर कैन स्टोर दैट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंटीजर ले सकते हैं अभी. एंड लेट्स डिक्लेयर इट ऑफ साइज n बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव n इनपुट्स. सो हमने एरे डिक्लेयर कर लिया. अब एरे में इनपुट भी ले लेते हैं. फॉर int I is equal to 0, I less than n because n inputs है I plus plus, and I will store that input in my array. Okay guys, मैं पे array का नाम ना cost रखता हूँ because that will make more sense because it is storing the cost of the houses, right? So having done this, हमारे पास पूरी input आ गई. हमारे पास 4 का वैल्यू आ गया, हमारे पास 100 आ गया, हमारे पास वैल्यूज आ गई चारों. Now let's sort this in ascending order because हमें सबसे cheapest house सबसे पहले purchase करनी है so that we can buy maximum number of houses. Cool. So let's sort that. We know how to sort. अभी just हमने use कर रहा है. I'll just say cost and I want to sort all the values. So I'll say cost plus n and just like that हमने sort कर लिया. So guys, any doubt still here? Because now we are going to do something very tricky. Not exactly tricky, but the core observation जिससे ये पूरी question solve हो जाएगी. The core part of the algorithm. So no doubts, cool. What I'll do now is कल हमने while loop के बारे में पढ़ा था, right? And while loop के अंदर अगर आप कोई condition लिखते हो, वो तब तक execute होगा जब तक वो condition true है. So मैं पे क्या करूँगा? I'll say while and guys tell me मेरे पास कितने options है total? n है, right? So what I have to do here is मुझे loop control variable बनानी पड़ेगी. I'll name it ptr is equal to 0. And मैं क्या करूँगा? While ptr is less than n, loop को चलाते रहो. Make sense? क्योंकि हमारे पास total n options हैं. हमारे array में n values ही हैं. I cannot go beyond n वरना वो error हो जाएगी क्योंकि ऐसा कोई value है नहीं. And if I go beyond that, आपको भी पता है value 0 आएगा या फिर garbage value आएगा. Because we have n values in our array. So I'm going to run my loop till ptr is less than n. अभी यहाँ पे while loop में हम एक और condition use करेंगे. Can anyone tell me what is going to be the next question? Just think about it. Think about the thing कि हमारे पास एक fixed budget है. हमारे पास सिर्फ एक fixed budget है. Think about, keep that in mind. Sum is less than cost. Great. Someone just pinned in the chat, sum is less than cost. Exactly. And if I convert that into a little mathematical term, हमें बस यही करना है कि हमारा budget variable b should be greater than 0 or greater than equal to 0. ठीक है? Or I should say 0. क्योंकि अगर once budget 0 हो गया, then we literally cannot buy anything. And ये conditions में भी mentioned है कि house की cost at least 1 rupees होगी. So we will only run that loop जब तक ये दोनों के दोनों condition true है. हमारे पास और options available हैं. हमने array की पूरी value check नहीं कर लिया है. And also budget should be greater than 0. So हमने ये condition बना लिया. Now we are inside the loop. If this condition is correct, what will I do is मैं first of all budget is equal to budget minus current house cost of ptr because ptr is the loop control variable. So जो भी current house है जिसने ये case को solve करा है, it is true for that. उस house का budget हमारे total budget से deduct कर दो. With that being done, मैं pointer को plus plus कर दूंगा और जो मेरा loop control variable है that should go to the next value. And
इसके साथ guys we need to use one more thing. I need to keep a count of कितनी houses मैंने purchase करा. So every time this condition is true, every time this condition is true, it means ये house हम purchase कर सकते हैं. So inside the loop मैं इस variable को plus plus हर बार करूँगा, Okay, right? this one, there is Yeah, a little thing you missed, that the budget yeah. should not be greater than 0. The budget should be greater than the cost of the next house. If budget Yeah, say I'll it come is to that. okay. I'll come to that. First of all, मैं basic सबसे native logic से समझा रहा हूँ. I'll come to that. कि you also need to check the budget of the next house, and with that being done, if I see out here what is the total number of houses that we have bought till now, I can just say count, and I'll use end line. Okay. एंड गाइस अभी इसमें ये जो लॉजिक है ये एक कंडीशन पे फेल होगी, दैट इज यू नो इसको एज्यूम करते हैं अगर हमने इसको सॉर्ट कर लिया, वी हैव 20 देन 40 एंड देन 90 90. सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बजट से, सो वी हैव 80 रुपीज लेफ्ट, फिर 40 सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज 40 रुपीज लेफ्ट विद अस, है ना. एंड अभी हमारे पास बजट का वैल्यू 40 है एंड इसकी वैल्यू 90 है, बट ये कंडीशन अभी भी ट्रू है बिकॉज बजट इज नॉट येट जीरो एंड पॉइंटर इज ऑल्सो, हमने सारे हाउस ट्रैवल नहीं करे, सिर्फ 2 करे. सो यू नो ऑल्सो मेक श्योर दैट हमारी लॉजिक इस केस में भी चले, वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज budget is greater than cost of the next house, PTR plus 1. एंड यहाँ पे गाइस अभी एक और प्रॉब्लम आ गया कि we have declared the pointer plus 1 house, but here the problem is कि sometimes it might be possible कि हम last variable में है, we are already in the last value. I mean pointer already last value को point कर रहा है and हम then अगर यहाँ पे use करते हैं cost of PTR plus 1, then it is going to be a problem because यहाँ पे error आ जाएगी. So we will only check this condition while pointer has not reached the last value. So can anyone tell me in the chat section what should I mention in the condition such that हमेशा ये condition check होनी चाहिए, but pointer plus 1 सिर्फ तभी check करना चाहिए अगर pointer अभी तक last value पे नहीं पहुंचा. So someone said runtime error. So cool. What I'll do here is pointer and I will here use that PTR is equal to less than equal to n minus 1. So guys this will make sure कि हमेशा पॉइंटर जब लास्ट वैल्यू पे नहीं पहुंचा है, because we know the last value is n minus 1, we'll use this. Cool. And also this condition is true, and this condition is pretty complicated कि हमारे पास इतनी सारी वैल्यूज हैं, हम इतने सारे conditions use कर रहे हैं to do a very simple thing to check that we have enough budget for the next house. Instead of this, एक और easy way out है, we can just use pointer, I mean our current budget is greater than equal to PTR, sorry, cost of PTR. And the reason that I showed you the other different possibilities, I was trying to tell you कि एक simple चीज को करने के बहुत सारे ways हैं. I wanted to show you the hard way out, and then of course there is an easy way to do it. So guys, just in this 25 lines of code, we have solved a question that came in Google Kickstart last year. And अभी आपके लिए homework है कि इसमें कुछ टेस्ट केसेस थे. नॉट एवरी टाइम ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक इनपुट मिलेगी, वी आर गोइंग टू गेट मल्टीपल सच इनपुट्स. कोर एल्गोरिथम यही है, आपको भी ये करना है कि यू हैव टू यूज इट इनसाइड नेस्टेड फॉर लूप सच दैट ये जो एंटायर लॉजिक है ये मल्टीपल टाइम्स वर्क करे जो भी आपको फर्स्ट इनपुट मिली होगी. जैसे यहाँ पे 3 था, सो दिस एंटायर लॉजिक हैड टू वर्क 3 टाइम्स, जस्ट लाइक दैट. एंड बस इसको कंप्लीट करने के लिए हमें आउटपुट कुछ ऐसा देना है. सो here is something you need to change. आपको something like this output देना है, case hashtag एक number
जो आप टेस्ट केस नंबर लिख सकते हो. For now, I have not implemented the test case, and just like that, you can solve this question. So, any doubts still here? There is a doubt about while loop condition and how they're working. So I think Nikhil, that is the operator and operator we are using, and the Yeah, operator is uh, con- considering both of the values. So it exactly, is guys. clear to everyone else. I think once is So I'll clear. just run the code once, and I guess that will give everyone a clearer picture. G++, इस code का नाम क्या था? Allocation, and I'll use dot front slash a dot out. सबसे यही input देता है सबसे पहले. Our size is 4, budget is 100, and I'll give 20, 4 inputs, 20, 90, 40, 90. And guys, you can see the output is 2. ठीक है? एक और try कर लेते हैं second वाला. So the second wala is we have four options. Budget is 50 rupees. The houses are of price 30, 30, 10, 10. And you can see the output is 3, and that is correct. So यहाँ पे मैं मैनुअली रन कर रहा हूँ कोड को अलग अलग इनपुट्स के लिए. अभी आपको ऐसा करना है कि इस पूरे लॉजिक को एक फॉर लूप के अंदर लिखना है सो दैट इट विल वर्क एन नंबर ऑफ टाइम्स. एंड विद दैट आप इसी प्रॉब्लम पे आके आप यहाँ पे ना एक सेकेंड में अगर इसको फुल स्क्रीन में दिखाऊँ, you can just write your entire code here, which I have written here, and you can use okay, not okay, wait, where is the condition? Yeah, test run mode, or you can, yeah, submit attempt. You can use submit attempt button, and वो automatically check करके बता देगा if your code is completely correct. So guys, if there are no doubts here, Shridhar sir today will teach you another interesting loop technique that will be very helpful for you. And guys, this is the homework for you. Hmm. I think Devasam, your mic is muted. You can speak now. Yeah, You guys, were I was saying? telling. Yeah, guys, I was telling. This is all from my side today, and Shretit sir will tell you one interesting concept of for loops, and also we have very interesting, practice questions for today. So stay tuned. तो यार अभी एक रेंज बेस्ड फॉर लूप आता है. अभी तक व्हाट वी हैव डन, वी हैव एक्सेस द एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स एक्सेस हुए हैं, द एलिमेंट्स दैट आर एक्सेस, वी नीड द साइज ऑफ द एरे. बट व्हाट इज नाउ, वी विल एक्सेस एलिमेंट्स विदाउट द साइज ऑफ एरे. हाउ विल वी डू दैट? तो हमारा एक रेंज बेस्ड फॉर लूप, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. और ये टॉपिक भी आपको बहुत ही कम जगह है, मतलब देयर आर रेयर ऑफ द केसेस वेयर रेंज बेस्ड फॉर लूप इज taught. तो इसके अंदर हमारा फोर लूप, तो फोर कीवर्ड तो आ ही रहा है. अब उसके बाद हम एक डाटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंट एरे डिक्लेयर किया है, तो आई विल यूज इंटीजर टाइप डाटा टाइप, and then I will use the element. Element I can give any name to the element, and then a collection. Collection हमारा array है. अब इसको ना सिंटेक्स तो हमने देख लीजिए, एक काम करते हैं इसको ना प्रैक्टिकली साथ साथ में देखते हैं, सो दैट इट इज मोर बेटर अंडरस्टूड. तो हम एक नया बनाते हैं फाइल. Let us write the basic code here. We are asking the user for a value for the size of the array, and we are entering the size of the array using a for loop. I think the following code is clear to everyone. If someone is facing doubt in the code that I have written, please feel free to ask them in the comment section. अभी तक का कोड तो सबको क्लियर होगा ना? Any doubts in the current code? What I have done, I think that is clear to everyone.
ओके, तो अभी आगे चलते हैं फॉर ईच लूप के अंदर। तो अब फॉर ईच लूप में हमको क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर प्रिंटिंग द वैल्यू। तो हमको पहले प्रिंट कैसे करते थे वैल्यू, प्रिंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, एंड आई वाज यूजिंग आई प्लस प्लस और सी आउट ए आर आर और आई। तो हम ऐसे वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, बट नाउ व्हाट वी वांट कि हमको ऐसे वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है। नाउ वी वांट टू प्रिंट विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ द एरे। तो अब हमारे पास एक फॉर ईच लूप आया, एंड व्हाट फॉर ईच लूप दैट, लेट अस सी फॉर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने डाटा टाइप बताया। हमारे एरे का डाटा टाइप था इंट, तो वी विल यूज इंट हियर। इंट के बाद हम कोई भी एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग एलिमेंट, वी कैन यूज एनी ऑफ द कीवर्ड and we will use colon and I will specify the name of the array which is ARR. तो अब ये for loop क्या करेगा? What will this for loop will do? It will access the elements from the array one by one. और हम how we will access the element? Now we will access the element using element keyword. Element keyword, and now this is the same thing as the above. तो जो ऊपर हमने कोड लिखा है जिसके अंदर हमको इतनी सारी चीजें हमको स्पेसिफाई करनी पड़ी, वी विल हैव टू यूज ARR ऑफ आई, हमको बहुत चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ी। तो अब हमको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा है, एंड वी आर यूजिंग इट टू प्रिंट द एरे। लेट अस सी कोड दोनों अलग अलग हैं जो दिख ही रहे हैं, तो कि वो सेम काम कर रहे हैं कि नहीं, इज द कोड वर्किंग सेम और नॉट। Wait for it to compile and run the code. हम पहले 5 एलिमेंट्स डालते हैं अपने एरे में, 1 2 5 6 7 लाइव प्रेस एंटर। तो दोनों में हमारे एरे के एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं। तो दिस वाज द फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप का सिंटैक्स था हमको हर बार डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पर अब हम क्या बोलते हैं कि अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमको डेटा टाइप भी एवरी टाइम हमको स्पेसिफाई ना करना पड़े। वी जस्ट क्रिएट अ फॉर लूप और वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप उठा ले। तो उसके लिए हम ऑटो कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और ऑटो एलिमेंट एंड AR। So what auto will do here? अब ऑटो क्या करेगा, हमने ऑटो कीवर्ड से यूज कर लिया। तो ऑटो क्या करेगा, ऑटो हम सिर्फ एक उसी वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं विच इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, जो पहले से ही हमने जिसको डिक्लेयर कर रखा हो, लाइक दिस एरे इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ऑफ इनसाइड। तो हमने क्या किया, ये ऑटो कीवर्ड लगा दिया। अब ऑटो कीवर्ड क्या करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली टेक द टाइप ऑफ द एलिमेंट विच इज स्टोर्ड, तो उसको ऑटोमेटिकली फेच कर देगा। और आई थिंक अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अभी मैं इसको हमने कमेंट कर दिया, लेट अस रिमूव दिस कोड, हमने इसको हटा दिया एंड नाउ प्रिंट। Yes, this is different kind of loop. The for loop is valid without using the two semicolons, as this is a different kind of loop. This is a range-based for loop. This is not the old for loop. There is a different kind of for loop. Yes, Vishal, the question will be shared on the WhatsApp group. No, do not worry about that. अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने 5 एलिमेंट्स डाले, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दोनों में एक्सेसिबल हैं। बट व्हाट इफ अगर मैं इसका डाटा टाइप फ्लोट पे चेंज कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना था कि फ्लोट चेंज करना था। आई फेस द प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री वालों ने बोल दिया कि अपना डाटा टाइप चेंज कर दो, लेट अस टेक इट टू लॉन्ग।
Okay, long is not the data type, and is the data type for this, and I am using the data type for array. तो मैंने array को float type का बना दिया. So what it will do? अब हमारे यहाँ पे कोड फेल हो जाएगा because we are specifying int data type. But when we are using auto will automatically fetch the type of data. तो auto data type अगर हमको array के elements access करने हैं, it is best to use the range based for loop. अब इसको रन करके देखते हैं एक बारी. I think it should give error because we are using int data type in the above. इसके अंदर हमको एक तो कंडीशन और बाकी चीजें स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती. वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई द कंडीशंस एंड द सिंटैक्स इज वेरी सिंपल. So you must use the range based for loop while accessing the elements from any type of collection. For example, I am printing 5 value 1.23, 2.64, 3.45, 4.56 and 5.67. So here अगर हमने int स्पेसिफाई किया था तो उसने ऑटोमेटिकली int ही प्रिंट कर दिया. बट हमने तो पूरा का पूरा वो लिया था. हमने पूरा वो लिया था तो अवर कोड विल फेल अगर हम int डाटा टाइप यूज करेंगे या तो हमको यहाँ पे फ्लोट स्पेसिफाई करना पड़े. और फ्लोट स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड टू रिमेम्बर कि हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ डाटा हैज बीन डिफाइंड. So we will use auto data type. Auto data type will automatically fetch the type of data which is stored inside the array and it will automatically print it. So when we use auto, it automatically printed 1.23 and complete of the thing. So if we use auto, the complete thing will be printed. और थोड़ा एक और नया तरह का लूप देखते हैं आज. एक for each लूप होता है. Now we have seen the range based for loop. इसके अलावा एक for each loop होता है. अब for each loop, what does the for each loop does? What is the auto is a keyword. Yes, auto is a keyword and it is a static data type. तो auto एक keyword है. Consider auto as a keyword. तो अब for each loop देखते हैं. तो for each loop में हम क्या करते थे अभी this one has introduced you to the sort function. तो sort function ने क्या किया था हम it has sorted our elements from starting to ending. तो फर्स्ट आइटरेटर और लास्ट आइटरेटर हमने स्पेसिफाई किया था इन sort function. That was arr and arr plus n. तो हमको वही चीज इसमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है. इन for each loop we need to specify the iterator. अब थोड़ा for each loop की तरफ आते हैं. Let me create a new file. Okay. So अब हमने क्या किया हमने फिर से एक एरे यूजर डिफाइंड एरे ले लिया. in and in arr of n and we are defining we are asking the user to. तो हमने एरे इनपुट करवा लिया. नाउ प्रीवियसली इन द पास्ट वी हैव डन ए क्वेश्चन कि हमको एक नंबर इनपुट करवा के उस नंबर की टेबल प्रिंट करनी थी. तो अभी हम नंबर अब हमने क्या किया हम एक क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि हमने एक वो ले लिया है एरे ले लिया है. हमको एवरी एलिमेंट ऑफ एरे वी हैव टू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ एरे by 5 and print it. तो अब हमको सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है. वन ऑफ द थिंग विल बी फॉर ईच लूप.
one of the other thing can be for loop, or other thing can be while loop also. तो हम सब चीजों से कर सकते हैं. Let us do it with for each loop. अब हमारा for each loop क्या करेगा? For each for each loop के अंदर हम we will specify where it is starting. So it is starting from the ARR and it is proceeding to the ARR plus n. And now we have to specify a function. अब function क्या होता है? That is not told to you as of now. तो function का syntax एक बार आप जल्दी से समझ लेना. Function will be covered in detail in the upcoming sessions. So functions, do not confuse the functions now. तो void हमने एक fun बना दिया और अब हमने इसमें क्या किया? सी आउट एंड n मल्टीप्लाई बाय 5. अब हमने एक फंक्शन बना दिया. ये फंक्शन का काम क्या होता है कि हमारे कोड को हमने डिवाइड कर दिया है. तो अब ये फंक्शन एक n वैल्यू दे रहा है. फंक्शन इज टेकिंग ए वैल्यू n एंड इट इज प्रिंटिंग n मल्टीप्लाई 5. तो मतलब जो हमारा काम था, वी हैव टू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ एरे बाय 5 एंड प्रिंट. तो हमारा हर एक एलिमेंट 5 से प्रिंट मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएगा. ये काम हमारा फंक्शन अलग से कर देगा. अब हमको एरे के एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एरे हमको ये फंक्शन कॉल करना है. अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वी विल जस्ट राइट द फंक्शन नेम हियर फन एंड इट इज नाउ डन. पर इसको रन करके देखते हैं. एंड नाउ लेट अस रन इट. इस चीज में अभी जो हमने सिंटैक्स लिखा, इफ देयर इज सम डाउट इन दैट, प्लीज आस्क द डाउट. Please ask the doubts in the code which I have written, because I think function is something new to you and it will be covered in great detail. So let me write 5 values. 1, 2, 3, 4, 5. So it is printing 5, 10, 15, 20, 25. Okay. Why ARR plus n? Vivek has a doubt why ARR plus n. तो इस चीज को भी थोड़ा एक बार डिस्कस करते हैं कि why ARR plus n. Let me clear my whiteboard. लेट अस से कि मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है n साइज का और n इज इक्वल टू 5. ठीक है. तो अब हमारे ये एलिमेंट है 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट एंड 5 एलिमेंट. तो जो हमारा ए आर आर एरे है हमारा, दैट इज करंटली हियर. और हमको कहाँ तक जाना है? दिस एलिमेंट इज सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट. तो हमको फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो हमको कितनी चीजें ऐड करनी पड़ेगी? तो हमको 5 नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी. देयरफॉर वी आर यूजिंग ए आर आर प्लस एन, क्योंकि एन के अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही 5 की वैल्यू स्टोर्ड है. वी आर यूजिंग ए आर आर एंड ए आर आर प्लस एन बिकॉज ए आर आर इज द स्टार्टिंग ऑफ द एरे and ARR plus n marks the end of the array. So what we are performing operation for starting to ending. Let us suppose I am changing to ARR plus 3. What will happen here? So it will perform the operation for 3 elements only. Let us see it in action. I think it is not working in the Windows. That's the code compile and let us see the output. Why ARR plus n was there? Let me enter 5 elements 1, 2, 3, 4, 5. So it is only printing for 3 values. अगर मैं ARR plus 3 कर रहा हूँ, then it is printing for 3 values. ARR plus n will access all the elements from the array. And there is a question that parameter is not passed in the function. There is a great question by
Atkuri Balaji, and the function must parameter. Yes, the function must have a parameter code, and this is a specialty of for each loop. जिसको parameters के बारे में पता है, they can understand this question. और जिसको नहीं पता है, please wait for the function topic, and you will understand the topic as well. So, for each loop is automatically taking element of the array as a parameter and passing it to the function. So, for each loop is doing that. For each loop is passing the parameters automatically. So, we need not to specify the parameters explicitly. Is there any difference in the time complexity in normal for loop versus for each loop? No, there is no time complexity in the for each loop and for loop. The time complexity is the same, but we need to know about each of the things. And can't we take input using range based for? No, we cannot take input using the range based for loop, because first of all the elements should be initialized, and we even don't know how many elements to initialize, so we will not take the input. We can take the input, that is fine, but we should not take the input using range based for loop. What is function overloading will tell you, you don't need to worry about it. How to develop logic? Shikhar has asked the question to Divyasam, how to develop the logic. To develop the logic, we will have a dedicated session in the DSA series. So please join us in the DSA series, and where we will tell you how to develop logic. Are notes available for this topic? Muskan, yes, the notes are available for this topic and will be shared in your WhatsApp group. No need to worry about it. I think that marks the end of the today's session, as it is 7:30 today, so we will not extend the session further. Okay. So guys, thank you again for staying this long with us. If you are interested to learn, we are definitely be with you. You were saying something. Yeah, I was just saying thank you for staying this long, because today everyone has been very patient. And guys, just wait for a second. We have a surprise for you. We will be sharing a question set. And for the thing, Vishal has asked how to access 3 to 5 elements from 2 auto loop. Actually, the for loop, range-based for loop will automatically work for all the elements. Therefore, each of the loop have a different functionality. So, therefore, I have introduced every type of loop to you. Therefore, we have introduced for each loop also, and for range-based for loop also, because they are asked in the interviews, and they are very good too. Kshitij, is this? Has asked a question. I think that is more regarding you. Question mark. After this session, how can we stay updated about the upcoming session? Okay, great, guys. So, Kshitij, session is over from your side. May I take over for 5 minutes? Yes, you can take over for 5 minutes. The session is over for today, as it is already the time. We have much more to offer, but the time due to time limitation. हेलो एवरीवन, हेलो हाउ यू लाइक द सेशन? प्लीज भी एक बार बताओ यार कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा सेशन? कैसा लगा कि आज हमने गूगल से कुछ करा है, मतलब गूगल किक स्टार्ट का एक क्वेश्चन स्टार्ट करा है फ्रॉम दी वेरी शॉर्ट टाइम. एक 5 दिन का टाइम ज्यादा नहीं होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोडिंग, जो कि लोग 1 साल 2 साल से कर रहे होते हैं. दे आर नॉट एबल टू लिंक्स द लॉजिक एंड लिंक्स ऑल द कॉन्सेप्ट व्हिच आर टॉट इन लास्ट 5 days. बहुत आई थिंक सो आप सभी को जैसे दिख रहा है मुझे अमेजिंग सेशन, मस्त मजा आया. थैंक यू वेरी मच. पहली चीज. दूसरी चीज की यार देखो, अभी ना व्हाट वी आर डूइंग नाउ फ्रॉम नाउ, हम ना आपको ना एक रोज एक अटेंडेंस फॉर्म देते हैं विच इज कल भी एक अटेंडेंस फॉर्म दिया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे, है ना. सम ऑफ यू हैव अपलोडेड द ब्लैंक इमेज और सम ऑफ यू हैव डन द ग्रेट वर्क. मतलब कि I got almost 200 responses, जिसमें से almost 100 to 150 रिस्पॉन्सेज में लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कर रखा था. वी डोंट वांट कि आप परफेक्ट कोड दो, वी जस्ट वांट कि आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालो, ठीक है. पहली चीज तो ये एक बेसिक चीज बताता हूँ. सेकंड चीज की यार, आज से ना हम ना आपको ना डेली 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस 5 7 जो भी टॉपिक के
अकॉर्डिंग रहेगा, वो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस. व्हाट यू कैन डू गाइस, यू कैन रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट थ्रू, क्योंकि ये वीडियो अभी तो जाने वाली नहीं है, ये आपके सेशन पे ही रहेगी, मतलब आपके चैनल पे ही रहेगी डॉट क्वेश्चन मार्क पे. ठीक है, तो यू कैन रिवाइज दिस. वाई डोंट यू टीच? अरे सर वी विल ऑल्सो टीच. आएगा यार, अभी 3-2 मेंटर पढ़ा रहे हैं. वी विल ऑल्सो, देखता हूँ मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बट द बैक हैंड वर्क इज वेरी हैट्रिक फॉर मी फॉर दीज डेज. ठीक है गाइस, अटेंडेंस फॉर्म मैं दे रहा हूँ. अटेंडेंस फॉर्म के अंदर ही ना यार हमारे ना कुछ सोशल मीडिया चैनल के लिंक है, जिसने अभी बोला था कि ना after these series what how we can able to interact with all the other sessions, कैसे interact कर पाएंगे. तो हम अपनी ना सोशल मीडिया को थोड़ा अपडेटेड रखते हैं. अभी आप देखोगे यार लिंक्डइन पे जाके तो यू गेट कि हमने अभी तक कितने सारे वेबिनार्स कराए, कितने सारे मेंटर टॉक्स कराइए, कितनी सारी रियल टॉक्स कराइए जिसे हम बात करते हैं. ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे. तो आई थिंक सो अभी के लिए मैं अटेंडेंस फॉर्म आपको शेयर कर रहा हूँ गाइस, है ना. डू फिल दैट अटेंडेंस फॉर्म फर्स्ट, क्योंकि उस अटेंडेंस फॉर्म को जब आप फिल कर देंगे ना, उस अटेंडेंस फॉर्म में आपको एक लिंक मिलेगा जो गिटहब का लिंक होगा डॉट क्वेश्चन मार्क के. एंड ऑन दैट पर्टिकुलर गिटहब एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग जो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 5 के कोड्स हुए हैं उस गिटहब पे आपको मिल जाएंगे. और उस कोड्स को हम डेली अपडेट करते रहेंगे. यस सर, टेल मी द इन व्हाट. अरे यार, वेलकम. डोंट थैंक मी गाइज. आई एम ओनली द पर्सन हु आर हियर टू हेल्प यू आउट. Kshitij, can you please update this form in the comments in the description? And guys, there is something important for you guys. These sessions are yeah, Kshitij, don't do this. I think it will be not available. No, they can't read I this. am updating in the comment section only. Please update that. Okay, so guys, I think please give us the update or something you want from us in the comment section. What, please more focus on the constant type questions like hacker earth etc. I love your session to this logic. Okay, no, guys, hacker earth or these are the great platform to code, है ना. We are selecting the question which are asked in the industries. Now we are taking the questions which are asked in the industries. We are not depending on the third platform to to gather all these questions. Okay, because these questions you can gather yourself, but the question which is asked from the in the industry, you can't get that freely available, or if it were available, so you can't segregate that all the questions. So that's why we are setting those questions which are usually asked in the industries. That's why we are taking these. Third platform you can visit. So it is, GitHub link is in the is in the chat as well, is in the description as well. You will find the repo of Learn C++ as well. And guys, I think this Saturday or Sunday we will have a we will have a workshop on Git and GitHub where you will learn GitHub from very basics to very advanced, because GitHub is, I think, is a tool which is used widely in the industries, not in only in the industries, but now students are using this particular tool for open source collaborations. Okay guys, so don't forget to attend it. And guys, we want a favor from your side. We want कि आप हमें बताएं कि वी आर प्लानिंग फॉर AWS वर्कशॉप विच इज फॉर 7 days एंड वी विल कवर ऑलमोस्ट 25 सर्विसेज, जिसमें EC2 होगा, S3 होगा, जिसमें आपके AI के कुछ सर्विसेज होते हैं Amazon के, वो भी होंगे. तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट. डू यू वांट this type of session guys? Please ping in the comments. So I have shared the screen. There are two of the person. One is Suri Bhuller. I think is my screen visible as of now? No. I think your screen is loading. Guys, screen is visible for you. On my side, No, it is. it's not yet Let's visible. wait. Okay. I think yes, it is visible now. There are two persons. One is Suri Bhuller and another one is Rajat Rana. They are doing a explicitly great job. They are coding on the phone using an online IDE. They are very dedicated person, and I want everyone to give a shout out to Rajat and Guri in the comment section itself. So Rajat and Guri, open the chat. Congratulations guys, if you are if you are in today's session, as I think, so congo to you guys. We are watching each and every response what you guys shared. You guys are nailed it, what we can say guys. It's an very
इट्स अ कम्युनिटी थिंग व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। अभी ना हमें बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है आप लोगों के साथ करने में, और हमें ना कंटिन्यू करना है टिल दी टिल टिल 4 to 5 months, जिसमें हम अभी तो C++ लेकर आए हैं, अभी DSC भी लाएंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी लाएंगे, ठीक है। अभी AWS है जो, और GCP, सारी तरीके की सर्विस जितनी मतलब जो इंडस्ट्री में तहलका मचा रही है ना या गाइस, जो आपको कॉस्ट करती है 20, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपीज के कोर्सेज जो आपको कॉस्ट करते हैं, वो आपको डॉट क्वेश्चन मार्क में ऑलमोस्ट फ्री मिलेंगे, ऑलमोस्ट फ्री मिलेंगे। तो गाइस मतलब AWS के लिए आपको ना AWS आने की भी नीड नहीं है, यू ओनली नीड टू हैव अकाउंट, और अगर अकाउंट भी नहीं है तो हम बनवाएंगे अकाउंट भी, हाउ टू क्रिएट दैट अकाउंट, व्हाट व्हेन विल। देखो यार, आज से हमने चालू कर दी कोडिंग पार्ट, तो बहुत जल्दी से कोड अभी प्रोजेक्ट अपना चालू करेंगे हम। मंस्टेक वाला आप लोग नहीं, मंस्टेक वाला तो नहीं, बट खोज इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन गाइस, शूट आउट टू खोज, बहुत हेल्प करी है। एंड गाइस ये जो हो रहा है ना यार C++ का, बिकॉज ऑफ खोज ओनली, खोज, IUCE, प्रेप बाइट्स, दे गाइज हैव नेल्ड इट, बहुत ज्यादा हेल्प करी है इन्होंने। और यार आज ना हमारे पास ना एक और बहुत सही न्यूज है, टुडे वी हैव अ क्विज नाइट, है ना। तो वो खोज के इंस्टाग्राम पे होगी, मैं आपको सभी को लिंक्स भेज दूंगा, जाना और वहां पे ना क्विज नाइट अटेंड करना, बहुत अच्छी क्विज नाइट होने वाली है। जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम क्वेश्चंस आपको आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे, बट डू अटेंड, जिस जो इंस्टाग्राम यूज करता है, गो एंड हैव सम गिग विद दिस, बहुत अच्छा लगेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने खोज ने हमें दिए हैं। Excuse me. Can I यस have यस 30 seconds? Yeah, I was just saying कि group कोई ना doubt पे पूछ रहा है how to submit the questions on GitHub. Well, you don't need to submit it. It is for practice. आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करो एंड ट्राई इट ऑन योर एंड, एंड आपको वहीं पे कोड सॉल्यूशंस नाम के फोल्डर पे करेक्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगी, तो कंपेयर कर लेना। and guys, I think that's all for today, है ना। आई डोंट, अजय जिसको गेटअप नहीं चलाना आता, नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड यू दी PDF, ठीक है, PDF से देख लेना अभी के लिए। बट जैसे कि बताया था आपको, अटेंडेंस तो फॉर्म आई थिंक डिस्क्रिप्शन में क्षितिज ने डाल दिया है, एक बार जाके देखो डिस्क्रिप्शन में है या नहीं, है ना। Actually, it is दूसरी not चीज, currently in the description. I will update after the video because copy pasting was not available in the chat. okay, let give me 5 minutes, I will update it, give me 5 minutes guys। बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है। एंड गाइस प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज बी लाइव, क्योंकि लाइव क्लासेस में ना बहुत मजा आने वाला है। लाइव क्लासेस में आपको वो मिलेगा जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस में नहीं होगा, क्योंकि हमने लाइव इसलिए रखा है, ठीक है। तो कम डेली आपको अच्छा लगेगा, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लाइव आते हो तो वी कैन इंटरेक्ट विद यू गाइस। एंड गाइस वी विल श्योरली हैव अ डिस्कशंस, एक पैनल बना रहे, भी आर फॉर्मिंग अ न्यू पैनल, जिसमें अभी आपको क्या करना होगा, जब अभी कुछ दिनों बाद जब हम ये C++ की सीरीज खत्म करेंगे ना, तो उसी पैनल के साथ हमने एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो गिव मी 5 minutes, आई एम अपडेटिंग द डिस्क्रिप्शन गाइस। हो गया आई थिंक सो, गिव मी 5 minutes। इतने किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ ले यार, वी ऑल आर हियर टू आंसर योर डाउट। Yes, in the live session, you are given the chance to ask the doubts. In the recorded session, the doubt support is not available because the doubt support is always available on Telegram, but the live doubt support will not be available in the. Is AWS related with full stack development? No, AWS and full stack development are different, but we will have a full stack development course as well. We will have a basic of Linux course as well. We will have GitHub course as well. We will have DSA competitive programming. So there is much in the queue that is coming. तो ज्वाइन करो यार, मतलब बहुत मजा आने वाला है। अगले अगर 1 साल तक जो हमारे साथ है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, MNC में जॉब लेके निकलेगा। एंड गाइस दोज हु आर थिंकिंग कि ना अभी हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वी आर वर्किंग विद वेरियस इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट, नॉट ओनली इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं हम। वी आर वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डोमेन्स, अगर देखा जाए तो वी आर वर्किंग ऑन डेवऑप्स, AWS, वी आर वर्किंग ऑन क्लाउड वर्चुअलाइजेशन, तो काम हमारा है ही, बट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डेटा साइंस, AI, ML, बहुत सारे डोमेन्स है। तो डॉट क्वेश्चन मार्क OP in the chat guys, Yes, of course, OP in guys. the We are chat going to guys। conduct a lot of courses. Web development हो, सब कुछ होगा, हर तरह का डेवलपमेंट होगा। Stay tuned and follow our social medias. हाँ तो मैंने लिंक दिए गाइज, आपको जाओ और सोशल मीडिया वीडियो पे फॉलो वॉलो करो यार, हमें थोड़ा बहुत रीच वीच दो, हमें भी पता लगे। And यार guys, there's अगर another लग रहा है amazing thing that कि has कुछ happened today. आज we have 100% likes in our video.
और एंड अगर कोई ठीक है, चीज लग रहा है बहुत किसी अच्छा को कि बेनिफिट मिल रहा है, तो आई थिंक दैट इज अ गुड वे, सो दैट यू हैव टू स्प्रेड इट टू द कम्युनिटी सो दैट यू गेट मोर बेनिफिट। जितना ज्यादा कम्युनिटी में स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करो, इफ यू फील यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। और जो एंड नोट्स हैं और जो कोड है, आई थिंक नोट्स भी आप अपने लिंक्डइन पे शेयर करो, सो दैट पीपल आल्सो गेट टू नो दैट यू आर परफॉर्मिंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग गुड, एंड दे आल्सो गेट एक्सेस टू द नोट्स। एंड गाइस, हम स्टार्ट करेंगे कुछ लिंक्डइन से भी रिलेटेड, जिसमें आपको पता लग सके लिंक्डइन क्या चीज होती है, क्या तहलका मचाया जा सकता है लिंक्डइन से। लिंक्डइन में कितनी मस्त मस्त चीजें हैं ना, आपको नहीं पता है अभी। मतलब लिंक्डइन से क्या चीज आप कर सकते हो ना, पावर ऑफ लिंक्डइन, यू डोंट नो द पावर ऑफ लिंक्डइन। बहुत सारे लोग लिंक्डइन नहीं यूज करते होंगे, बट इन अपकमिंग डेज तो हमारे पास एक वर्कशॉप प्लान है जहाँ पे हमारे को लिंक्डइन में जिसके 15 से 20 हजार फॉलोवर है, जो हर वीडियो पे, हर पोस्ट पे अप्रॉक्स 2,000 3,000 लाइक क्रॉस करता है ना, हम वी विल इनवाइट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ठीक है, यू ऑल आर 3 मेंटर एंड यू आर कॉलेज वर्किंग। अरे वी नॉट आर वी ऑल, मतलब तीन ही नहीं है यार, वी आर यू नो वी आर अ टीम विच कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डोमेन एक्सपर्ट और मेंटर। तो तीन नहीं है, बहुत सारे मेंटर हैं हमारे पास। बहुत सारे मेंटर्स साइबर हैं। और सेशन, देखो यार, अगर अगर ये वीडियो ना हर्ष संधू देख रहा है ना, तो प्लीज हर्ष, कैन वी कंडक्ट अ साइबर सिक्योरिटी सेशन गाइस? बिल्कुल होगा यार। अटेंडेंस लिंक यार डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड है, प्लीज गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। देखो यार, नीचे जाके देखो। आई यूज there लिंक्डइन is a बट question आई by डोंट नो। Umang that he uses LinkedIn but does not know how to use GitHub. So GitHub workshop is coming for you. In 2 days, you will learn the complete GitHub. You will know how to contribute on GitHub. You will know how to upload your code, how to contribute in others repository. So everything will be covered from the very basic. So no need to worry about that. और जो भी कोड होंगे, जो भी मटेरियल होगा, वो आपको डेली डेली अपडेट करते रहेंगे। नो क्वेश्चन टुडे। नहीं यार, अटेंडेंस फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं था आज। आज इसलिए क्वेश्चन नहीं था क्योंकि आज हमने थोड़ा कोडिंग पार्ट करा है। तो वी विल थिंक कि आपको, अगर आप गिटहब पे जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। 3 एमसीक्यू मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ट्राई टू डू दैट। अगर नहीं होते तो वहीं पे सॉल्यूशन अपडेटेड है, Rather गो than एंड सी द सॉल्यूशन। कि क्वेश्चन हमको सप्लाई करो, दैट इज नो। अगर आपको एक गूगल से देख के दैट एंड यू आर प्रोवाइडिंग आंसर टू अस, देन देयर इज नो बेनिफिट। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डू नॉट बी ऑनेस्ट टू अस, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड सी हाउ मच यू हैव गेन्ड थ्रू आउट द सेशंस। सर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप एक काम करो कि डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आपने एक बार रिफ्रेश कर लो तो लिंक मिल जाएगा। अरे क्यूबरनेट्स तो हमारा प्यार है, क्यूबरनेट्स पे तो हम करेंगे बिल्कुल। केएटएस इज आवर लव, तो केएटएस पे तो आएगा। मतलब कि केएटएस एक बहुत छोटी सी चीज है डेवऑप्स में। डेवऑप्स का ऑलमोस्ट आई थिंक वी विल गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट, चाहे वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो डॉकर हो, जेनकिंस हो, एनसिबल अभी हमने कराई था। एनसिबल की 30 डेज की सीरीज करी थी, 15 to 20 डेज की सीरीज करी थी, जिसमें फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस एनसिबल पढ़ाया था। तो और जिसने एनसिबल अब अटेंड करा वापस होगा से उसे आने पता वाला होगा। है फिर से, ऐसा नहीं कि तो एक बार वापस से करवा एक दिया बार तो नहीं एनसिबल आएगा। और देखने को मिलेगा, प्लीज कंडक्ट। साइबर सिक्योरिटी वी विल, हाँ साइबर सिक्योरिटी वी विल श्योरली कंडक्ट। आपकी टीम में न्यू बेस की है? अरे नहीं यार, मसीहा वसीहा कुछ नहीं है। हम वी आर ओनली डूइंग फॉर द कॉज, फॉर द सोशल कॉज, और मजा आ रहा है हमें। लर्न सी प्लस प्लस एग्जांपल एंड आउटपुट इज रॉन्ग। जहाँ तक there is a doubt from Anand, you guys are from which college? I अरे think it अरे does not depend from which college we are from, which college you are from. It only depends on your knowledge that get you name and fame. So please हाँ, focus दूसरी on the बात, हम knowledge. यूपीएस से है। यूपीएस से है हाँ, हम, यूनिवर्सिटी ऑफ UPS से पेट्रोलियम एंड आनंद एनर्जी होगा। स्टडीज। बट हमारी मतलब टीम बहुत बड़ी है, तो टीम अलग अलग कॉलेज से है। तो यूपीएस इज आवर कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। कभी देखना आना हो तो आना, वी विल हेल्प। हाउ टू यूज गिटहब सर फॉर कोड? अरे मैं बताऊंगा यार, कोड मैं बता दूंगा। और गिटहब के लिए एक काम करना, रीड, आज मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ अभी से, और बता दूंगा मैं। यूपीएस ओपी इन द चैट गाइस। यूपीएस वाला अगर देख रहे हो तो यार थोड़ा देख लो, वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर यू गाइस। तो अच्छा लगा यार So I आपसे think मिलके ना। आज का सेशन एंड सर, as you said, we will get certificate for C++. Please let me know if I do other courses, so will we get certificate for upcoming course? Yes, there will be certification for every of our course. But हमारा जो course होगा, अभी भी चाहे C++ का भी course हो, they will not be based on the certification like you fill an attendance form and you will get certification. There will be certain questions and certain criteria based on which you will be judged.
You will be judged for your performance, not the correct answer. You will be judged for your efforts that you are putting into it. If there are efforts by your side, we will give you certificate, because efforts matter more than cramming something. एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आया यार, ये कल भी आया था जब देवेश सर ने लिया था, इज दिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पफुल इन एनी वे? यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब Actually, इंपॉर्टेंट नहीं, tool बट friend, अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आती, देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, सपोज यू नो व्हाट इज, मतलब अगर आपको पता है कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं, और उससे ऊपर की जैसे इंटरमीडिएट लेवल तक की हम प्रोग्रामिंग करेंगे, सी प्लस प्लस में एडवांस लेवल तक की प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, तो वो हो गई एक सी, एक लैंग्वेज बाइंडेड प्रोग्रामिंग, मतलब सी लेवल की या सी प्लस प्लस की। लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको जब डीएस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक बड़ा गोला है जिसका हम छोटे छोटे पार्ट करते हैं। तो वही एक चीज है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोई अकेली एक चीज नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें पहले सीखनी पड़ती है, उसके हाँ, लिए आपको और डीएस कॉम्पिटिटिव होना प्रोग्रामिंग चाहिए। पे जाने का तभी बेनिफिट है व्हेन यू नो द बेसिक्स। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी ऑफ द बेसिक्स। और ऐसा या नहीं है कि, और जितनी भी हमारी वर्कशॉप हैं, ऑल ऑफ द वर्कशॉप दैट वी विल टेक और वी विल दैट विल बी देयर, हर एक के अभी अंदर आपके लिए हाँ, प्री रिक्विजिट 0 होंगे। बस ये हो सकता है कि अभी जैसे डीएसए की वर्कशॉप निकालेंगे तो उसके लिए प्री रिक्विजिट होगी सी प्लस प्लस की वर्कशॉप। तो बी देयर विद अस फॉर द नेक्स्ट 1 year एंड सी द चेंज इन योरसेल्फ। ऑल्सो हमारे पढ़ाने से कुछ एग्जैक्टली। नहीं होगा, और आपको भी साथ साथ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे करवाने से आपको कोई चीज नहीं आएंगी। हाँ, अभी अभी ना यार, Guys, अभी आबिद ने एक बहुत सही बात कही है कि सर्टिफिकेट डजंट मैटर, बेटर है स्किल सेट। अच्छा, एग्जैक्टली गाइस, सर्टिफिकेट की ना कोई वैल्यू तो नहीं होती है, बट जब तक आप उस सर्टिफिकेट को अचीव करने के लिए अगर कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, जैसे अगर आपको सपोज हमारा अभी सी प्लस प्लस कर रहे हो, तो हम सी प्लस प्लस में आपको बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स देंगे। कोडिंग एक कोडाथॉन होगा यार लास्ट में, उसमें जो जीतेगा उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है, ठीक है। उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा, उसमें जो कुछ कर कर आएगा ना, मतलब कुछ बनाकर आएगा, कुछ डेवलप करेगा, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, 10 में से 4 5 6 7, तो उस चीज की वैल्यू है। सर्टिफिकेट वो वैल्यू करते हैं, ना कि कोई कुछ भी। या डीन एंड ज्वाइन कर देयर इज अ सकते हैं, वी विल श्योरली सेंड यू द लिंक्स, श्योरली गेट अ चांस। भेजेंगे यार, अभी है हम ना। अपनी टीम को अभी हम वी एक्सटेंड आर कर रहे हैं, प्लानिंग। तो हाँ। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और एक क्वेश्चन है हम्म। दोबारा से टूर फ्रेंड से, कैन यू टेल व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन वी बिल्ड? प्रोजेक्ट्स पे भी अरे आएंगे, एक बार लेट अस कंप्लीट द बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस। उसके बाद आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, यू विल गेट टू अब वर्क ऑन सम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जिसका हम रेफर लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके अंदर आपका वो होगा। और सार्थक, एक क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए ही आया है, ये स्पेशली तुम्हें हमसे करो, विल यू गाइस विल गाइस सिट इन अटेंड प्लेसमेंट और प्लेसमेंट? कंटिन्यूइंग विद एंटरप्रेन्योरशिप? गाइस प्लेसमेंट और मतलब प्लेसमेंट जॉब वगैरह तो यार देखो, वी वांट टू बी अ जॉब क्रिएटर अदर देन जॉब सीकर। देखो प्लेसमेंट हो जाती है जबरदस्ती, अगर लेनी पड़ जाती है तो बात अलग है। वैसे ऐसा कुछ प्लान नहीं है, वी वांट टू बी जॉब क्रिएटर, और हम क्रिएट करके रहेंगे, ठीक है। वी क्रिएट, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम कर रहा है, तो वी वांट टू बी अ जॉब, नॉट वी वांट टू बी अ क्रिएटर। तो क्रिएटर बनने की पूरी कोशिश है, तो कर रहे हैं। प्लीज टेक अ सेशन ऑन जीसॉक। यार जीसॉक पे सेशन करते हैं यार, जीसॉक पे भी एक प्लान करते हैं। जीसॉक, किसी जीसॉक के बंदे को बुलाते हैं जिसने जीसॉक जीसॉक फोड़ रखा के हो। लिए उसी को लेके आएंगे जिसने जीसॉक फोड़ा हो। हम सेशन नहीं लेंगे, लेट अस इनवाइट दैट पर्सन जिसने जीसॉक फोड़ा हो। अभी आपके लिए ना एक बहुत मस्त चीज आने वाली है, एक गिटहब ने एक्सटर्नशिप प्रोग्राम चालू करा है, गिटहब एक्सटर्नशिप। तो गिटहब एक्सटर्नशिप प्रोग्राम है क्या और क्या है, उसके लिए हम जो इंडस्ट्री वो एक्सटर्नशिप प्रोग्राम करा रही है, इंक्यूबेट आईएनडी, जिसके कोलैबोरेशन में गिटहब ने ये प्रोग्राम करा रही है, वी विल आस्क देम कि अगर उनके स्पीकर्स या उनकी कंपनी से कोई आ सके तो दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। इट्स अ काइंड ऑफ जी सॉक फॉर यू गाइस, मतलब एक बहुत सही चीज होने वाली है। कब तक लगे? 15 नहीं यार, 14 दिन में हम खत्म कर देंगे भाई, 14 दिन में खत्म कर देंगे। और नहीं, जो बेसिक के बेसिक के साथ। साथ उससे कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे, मतलब जितना भी सी प्लस प्लस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा कवर होगा। एंड देर इज अ डाउट अगेन बाय डेव निंजा कि हाउ डिफिकल्ट इज इट्स लर्न टू सी प्लस प्लस फॉर अनरियल इंजन। एक्चुअली अगर यार आपको अनरियल अनरियल इंजन इंजन पे सी प्लस प्लस शुरू करनी है, देन ऑल्सो आपको सी प्लस प्लस के बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि उसकी सी प्लस प्लस डिफरेंट है। पर आप उस सी प्लस प्लस को भी तभी समझ पाओगे व्हेन यू नो द बेसिक्स। अगर आपको वेरिएबल्स और फोर लूप का ही नहीं पता, then how will you and understand the C++ for Unreal Engine? and Dev Ninja, the question that you're asking कि C++ सीखना है आपको Unreal Engine के लिए C hash आना चाहिए, that is another language, so उसका भी ध्यान रखना तो if you're अच्छी into बात है यार। game design. Exactly.
मस्त है मस्त है। एक चीज यार, आप डाउट्स लेते हैं, जितने डाउट्स हो सारे डाल दो, सारे डाल दो, I बिकॉज will आई एम suggest लर्निंग सी this प्लस। real world jobs. सी प्लस प्लस Topic यार सबसे देखो, बड़ी, एक अगर एग्जांपल देखना है तो टेस्ला को देख लो ना, पूरी टेस्ला की जितनी भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वर्किंग ऑन सी प्लस प्लस। आई थिंक टेस्ला को तो आजकल सभी जानते ही होंगे। हाँ एग्जैक्टली, एलॉन मस्क भैया ने सबको जनवा दिया है व्हाट इज टेस्ला। तो एलॉन मस्क बनो, exactly. जॉब For this सीकर। question मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाऊंगा. What you can do with C++. If I गाइस have it with you आस्क guys, योर I can डाउट, show you one अच्छा लग रहा amazing है, thing. अच्छा लग रहा है आज। क्यू एंड ए आस्क मी एनीथिंग कर दो यार, आज बना दो, जिसको जो जो डाउट्स है ना, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर और में, थर्ड ईयर में, देखिए, फोर्थ ईयर में, अगर आप तो पूछना डालो चाह रहे यार, हो ना कि डाउट्स हम डालो, एक अच्छा लग रहा है। एक लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक हम सी प्लस प्लस, चाहे जावास्क्रिप्ट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वी कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम ए लैंग्वेज. इट इज like something can be difficult from one of the language and something can be easy from some of the language. इसीलिए हम easy के according classify कर देते हैं that this language is for this and this language is for this. तो आपको किसी चीज के लिए करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो होगा. अरे और कोई डाउट हो तो यार, और कोई डाउट पूछ लो, अच्छा सा लग रहा है। अरे गॉड ब्लेस अस, थैंक यू वेरी मच, हमें अच्छा सा लगा, मतलब किसी ने तो सोचा। और बट बाकी चलो आज की स्ट्रीम को एंड करते हैं. एक सेकंड और क्षितिज मुझे थोड़ा सा एक सेकंड दो मुझे, ओके ओके, विदाउट एंडिंग दिस स्ट्रीम। यार आज ना पहले स्ट्रीम से बाद ना क्विज नाइट ज्वाइन कर लेना, अच्छा लगेगा, क्योंकि खोज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज डूइंग द कंटिन्यूस सपोर्ट, बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है यार खोज। IUC, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना यार आपके कॉलेजेस में, ट्राई to be in these organizations because these organization have a particular aim कि ना आप लोगों की हेल्प कर पाए। तो बहुत अच्छा लगा यार इन ऑर्गेनाइजेशन के बंदों से बात करके, शुभम से बात करके, विशाल से बात करके, दे आर रियली ग्रेट गाइज, दोस आर वर्किंग फॉर यू और गाइज। जो क्विज नाइट है दैट इज ऑन इंस्टाग्राम लाइव, तो उसके लिए कोई यूट्यूब लिंक नहीं आएगा, दैट इज ऑन इंस्टाग्राम लाइव एंड वी विल शेयर द लिंक्स इन योर ग्रुप इटसेल्फ. हाँ एक दैट इज सेकेंड, नॉट ऑन यूट्यूब लाइव. ओके। अरे आज आज आस्क मी एनीथिंग सेशन करते हैं यार, मतलब अच्छा लग रहा है कि अभी डाउट्स आ रहे हैं तो ले लेते हैं सबके। चलो पहला डाउट, मोस्ट लैंग्वेज ड्राइव फ्रॉम C++, एग्जैक्टली, आई एम नॉट स्ट्रांग ईयर। हाँ एग्जैक्टली यार, बहुत सारी। Guys, C++ language आया था 1980s में, and from that Java, Python, all the languages that you learn, somehow C is the parent language. गूगल फॉर्म क्या बनाएंगे यार, गूगल फॉर्म नहीं, हम एक ना गूगल मीट सेटअप करेंगे अभी आने वाले कुछ दिनों में ना, हम थोड़ा अभी गूगल मीट के प्रोजेक्ट्स साथ वगैरह एक में इंटरेक्टिव यूट्यूब सेशन ही बिजी शेड्यूल है करते हैं तो, ताकि वो आगे हाँ तक भी रहे. हाँ अभी इतना थोड़ा हम बिजी है, किसी किसी प्लेटफॉर्म को लेके कुछ काम कर रहे हैं मस्त साहब के लिए, तो एक दो दिन बाद देखते हैं, करते हैं कुछ बिग प्लान। I am बट not strong in C++. There is a doubt. I am in second year, so second sem is late for placement. No, you अरे can do नहीं, good. Actually, we started in the end of second year itself, and we are now teaching you. So it depends on you and your dedication, how much you are dedicating towards the growth of yourself. You are not dedicating towards the growth of any other. You are dedicating towards the growth of yourself. So गाइस अभी ना, अभी जैसे आप ये कोर्स कर रहे हो, ये एक, मैं कोर्स नहीं बोलूंगा, ये एक इनिशिएटिव है। देखो कोर्स में ना, कोर्स होते पेड वगैरह यार, महंगे महंगे जाओगे कोर्स खरीदोगे, नहीं, ये एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव इन द सेंस कि सोशल, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हो आप इसे, लोगों के yes, साथ सोशली कनेक्ट करना, लोगों को सोशली कुछ देना जो हमें आता है। ठीक है, वी आर ए कम्युनिटी गाइस, ठीक है, हम कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिग ब्रांड बैठे है आपको महंगे महंगे कोर्स देंगे, तो कोर्स नहीं, इसे इनिशिएटिव बोले तो अच्छा लगता है यार। ठीक है, अरे कॉम्पिटिटिव करनी है तो भाई C++ करो भाई, C++ से अच्छी कॉम्पिटिटिव होती है, जावा वगैरह से टिपिकल हो जाती है। जावा से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, और सी प्लस प्लस में इतनी फास्ट लैंग्वेज है ना सी प्लस प्लस, तो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ काम करते हैं आपकी सी प्लस प्लस. तो इफ यू है ना, वांट और टू, आपका ये डाउट है विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर प्ले। देखो यार, लैंग्वेज कोई सी भी आती है, बस अच्छे से आती है, DSL गो आता हो, मस्त आता हो, OS आता हो, बस इतना ही DBMS चाहिए. आता हो, ये सब चीजें आती होगी तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आज के समय में ना OS वगैरह सबको आता है, बट आपके पास यूनिक क्या है वो थोड़ा लेके चलो। जैसे अगर आपको क्लाउड आता है, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन वगैरह आता है, अमेजोन में आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, जिस कंपनी ने ही AWS सेटअप करा, अमेजोन वेब सर्विसेज, उसकी बात कर रहे हो, अगर आपको क्लाउड के बारे में थोड़ा बहुत पता है या क्लाउड पे आपने काम करा है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके रिज्यूमे के लिए। और जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह उस पर देते हो कि हमने इस पर्टिकुलर फील्ड में प्रोजेक्ट करा, तो
these are And बिल्कुल there's a doubt नहीं कि स्किल्स So मानसिक सर्टिफिकेट स्किल्स आर मैटर। किसी भी काम के नहीं आएंगे आपकी प्लेसमेंट में अगर आपको नॉलेज नहीं आती है। अगर आपको C++ नहीं आती है एंड यू आर पुटिंग अ सर्टिफिकेट दैट ओनली डिग्रेड्स द वैल्यू ऑफ योर रिज्यूमे। तो अगर आपको C++ आती है एंड देन यू आर पुटिंग अ सर्टिफिकेट देन इट कैन बी बेनिफिशियल, बट इफ यू आर नॉट in C++, you do not know C++, then this certificate will be like degradation for your resume. Okay, someone is asking what should be the minimum extent anyone should know in second year. यार ऐसा कोई definition नहीं है कि ये आना चाहिए वो आना चाहिए second year के लिए, totally आप पे depend करता है। और अगर आपको अच्छा करना है ना, आप अपने लिए वो GitHub पे 180 days का या अपने आप पे ऐसा करो 100 days के डेली लगातार कोड करनी है, कुछ भी करो डेली करो, in 1 week you will feel very confident. And सर कल से कैमरा ऑन तुम्हारे लिए एक वो है थर्ड सर, आप भी कैमरा ऑन कर दीजिए। सर करेंगे कैमरा ऑन कल से करेंगे। एक्चुअली उनका कैमरा वैमरा थोड़ा खराब हो रहा था, नया कैमरा मंगाया दिव्य सोम सर ने। ठीक है तो गाइज आई थिंक सो मजा बहुत आया यार आज की स्ट्रीम में ना, खतरनाक स्ट्रीम गई है, लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए। ठीक है बहुत तगड़ा वाला मजा आया। फर्स्ट ईयर के बहुत सारे लोग हैं, सेकंड ईयर के बहुत सारे लोग हैं, थर्ड ईयर के बहुत सारे लोग हैं। लास्ट डाउट कर देते हैं। I am in second year BTech CSE in LPU. C++ is being taught in my class too, so I hope that these concepts that were not clear. देखो गाइस आपकी क्लास में आपके डाउट्स लिए नहीं गए या नहीं गए वो पता नहीं, लेकिन जब हम कॉलेज में थे, जब मैंने C++ पढ़ी थी, मेरे को C++ मुझे याद है कल्पना मैम ने पढ़ाई थी एंड शी टेक्स माय डाउट्स, तो मेरे डाउट्स लिए थे। आज भी जो भी मेरे टीचर्स है दे आर टेकिंग माय डाउट्स। ठीक है तो आपके नहीं ले रहे तो पता नहीं यार गाइस, देखो ये इसका हम कुछ नहीं कह सकते, बट हमारे सेक्शन के टीचर से इंटरेक्टिव बात करोगे ना देन दे विल टेक डाउट। इफ यू विल शो इंटरेस्ट इन देम दे विल आल्सो शो इंटरेस्ट इन यू। तो कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, जो भी टीचर है सब अपने बेस्ट ही पढ़ाते हैं। हम भी अपना बेस्ट पढ़ा रहे हैं। वी आर नॉट डिफेमिंग एनी ऑफ द टीचर, ऑल द टीचर्स आर बेस्ट, but it depends on you how much you are interacting and how much the teacher is taking interest in teaching you. अरे आफ्टर C++ लैंग्वेजेस गो फॉर डीएसए। अरे जाओ यार डीएसए के लिए जाएंगे हम, उसके बाद अदर लैंग्वेज। देखो यार देखो लैंग्वेज सुनो, लैंग्वेज ना हमने ना एक बैरियर बना दिया है कि ना यार पाइथन एक लैंग्वेज हो गई, जावा एक लैंग्वेज हो गई, या सिंटेक्स ही तो चेंज हो रहा है। सोच के देखो अगर मुझे एक फॉर लूप लगाना है तो फॉर लूप तो उसके लिए भी सेम है, और फॉर लूप तो सेम ही है ना यार। फॉर हो गया, विच हो गया, मतलब फॉर वगैरह जितने वाइल लूप वगैरह हो गए सेम, तो सारी लैंग्वेजेस के लिए सेम है। तो लैंग्वेज सिंटेक्स ही याद करना है एक बार अगर कोडिंग ढंग से आ जाए तो। अरे यार ठीक है let us connect with Shubham and let us plan a data science workshop. डेटा साइंस की हमने पहले भी करी थी, लिंक्स होंगे यार हमारे चैनल पर पड़ा होगा। मस्त सा डेटा साइंस का कोर्स है, एक अच्छा सा छोटा सा करा था, तो देखेंगे। कल्पना मैम तो यार बहुत सपोर्ट करती है यार। ठीक है बहुत सपोर्टिव टीचर है यार। हमारे हितेश सर है, बहुत सपोर्टिव टीचर है गाइस। वी लर्न डॉकर फ्रॉम से हैं वो लोगों तो को पता समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है सारे टीचर अच्छे हैं यार, किसी भी टीचर को बुरा नहीं बोल सकते तुम। दे आर परफॉर्मिंग ऑन देयर बेस्ट एंड दे आर टीचिंग यू द बेस्ट दे कैन ऑफर। एमएल देखेंगे करेंगे जिंदगी में कभी मौका मिला तो। जस्ट लास्ट क्वेश्चन देयर, अब तो एक ही में भी आ गया। जस्ट लास्ट करेंगे यार करेंगे साइबर सिक्योरिटी का। ज्योति ठीक है साइबर सिक्योरिटी, लेट मी आस्क माय मेंटर फ्री है भाई। मैं इतना तो नहीं बोल सकता कि हम एक पूरी सीरीज निकालेंगे, बट एक वेबिनार जरूर होगा और उस बंदे से होगा हु हैज फाइंड सम ऑफ द बग्स इन नासा इटसेल्फ। तो एक साइबर सिक्योरिटी का वेबिनार उस बंदे के साथ हम कंडक्ट करवाएंगे जैसे नासा में साइबर सिक्योरिटी के बग्स ढूंढे। तो बी ट्यून्ड फॉर दैट। डेट्स मैं अभी कंफर्म कर दूंगा, अभी मैं डेट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट वी विल श्योरली हैव अ सेशन विद द पर्सन। अरे एक्स्ट्रा करिकुलम क्या चाहिए यार, हम क्या डांस करके दिखाए आपको? एक्स्ट्रा करिकुलम का जो हैकाथॉन्स हम कंडक्ट करवा रहे हैं, दोस हु कैन कम टू देहरादून प्लीज जॉइन आवर हैकाथॉन। हैकाथॉन्स करा रहे हैं यार, कोडाथॉन करा रहे हैं यार। कोडाथॉन आ रहा है 15th को, ज्वाइन करो यार, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। वेब वर्चुअल कोडाथॉन है और जिसको आके मिलना है चलो देहरादून मिलते हैं सब। एक ऑफलाइन हैकाथॉन आ रहा है देहरादून में इन अराउंड अगस्त सितंबर। आई थिंक 15 अगस्त को हम करा रहे हैं वो हैकाथॉन। अभी फाइनल नहीं है, बहुत बड़ा हैकाथॉन है। इट्स अ लार्जेस्ट हैकाथॉन इन द उत्तराखंड स्टेट। तो आना यार, मिल लेंगे सब एक साथ। ठीक है और कोई डाउट? मजा आएगा, मतलब जो आ सकता है एक बार देहरादून आओ ना हैकाथॉन के लिए, सर थोड़ा बहुत मजा आएगा। प्लीज धीरे धीरे पढ़ा हम लोग सर। अरे यार फास्ट नहीं पढ़ाएंगे यार, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अच्छा लगता है हमें। बाद में कनेक्शन बात ऐसी है कि सिलेबस भी पूरा करवाना है और जो फास्ट हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो हम थोड़ा अपना पेस रिड्यूस भी करेंगे और
बाकी एक चीज और करना आप कि एक बार वीडियो देखने से कभी भी कोई चीज नहीं आती है, तो प्लीज गो एंड रिवाइज द वीडियो वंस अगेन आफ्टर द सेशन, और उसके अंदर आप पॉज करके जिस टॉपिक तक आपको समझ में यू कैन वॉच अकॉर्डिंग टू यूर पेज। तो लाइव सेशन देखो जिसके अंदर आपके डाउट्स और बाकी चीजें समझ में आए, एंड देन वॉच द वीडियो अगेन जिसके अंदर आप साथ साथ कोडिंग करके देखो, तो उसके अंदर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अरे आएंगे, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, सब रखेंगे एक साथ, मजा आएगा। अरे टिकट लिखवा दो, नहीं लिखवा सकते हम, सॉरी सॉरी, ये नहीं हो पाएगा हमसे। फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लीज आएगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत जल्दी आपके मतलब चैनल पे है। सब कुछ आएगा, फुल स्टैक फ्रंट एंड डेवलपमेंट आएगा, बहुत जल्दी आ रहा है बैक एंड आएगा, एवरीथिंग सेपरेटली आएगा, फुल स्टैक भी आएगा। यार। यार लॉजिक हाँ, बिल्डिंग का देखो, एक सेशन तो पूरा, लॉजिक बिल्डिंग का तो पूरे 30 डेज की वर्कशॉप आ रही है डीएसए की, तो इससे बड़ा लॉजिक बिल्डिंग का एक सेशन का क्या करोगे, पूरी वर्कशॉप आ रही है। गाइस आज द क्वेश्चन दैट वी सॉल्व टुडे गूगल वाली, तुम लोग गूगल करना एक चीज, क्या नाम है उसका, ग्रीडी एल्गोरिथम। आज हमने जो टेक्निक यूज करा इसको ग्रीडी एल्गोरिथम बोलते हैं, तुमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, एंड हम लोग एक कोर्स भी लाएंगे स्पेसिफिकली फॉर लर्निंग ऑल टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। सो चलो सार्थक, अब तो कमेंट भी आ गया, डन फॉर द डे बाय से। चलो अरे डन फॉर द भैया, डे। अच्छा चलो चलो, एंड अप विद सीरीज। मजा आया यार, आज बहुत ज्यादा ही मजा आया, खतरनाक। हाँ यार, कम से कम 30 डेज की होगी डीएसए। डीएसए तो बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत ज्यादा तगड़ा। तो एक सेकंड रुको। थैंक यू एवरीवन। आ गया। थैंक यू, चलो थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। Okay, guys, लेट्स thank होप you. कि Take care. ऐसी ऐसी मस्त मस्त सीरीज हम लाते रहे और आप हमारे साथ एंड तक रहो। और सारी अपडेट्स टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे चैनल है हमारे यार, लिंक्डइन वगैरह जाओ और फॉलो करो और पता लग जाएगी सारी अपडेट्स। ठीक है, थैंक यू, अगर आप सी किसी या भी एक बाय चैनल पे फॉर। कनेक्टेड हो, किसी भी एक थिंग पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कुछ मिस करोगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड ठीक है, बाय तो बाय। आज के लिए इतना ही। चलते बाय हैं, बाय। उमंग गुस्सा हो गया, गुड नाइट बोल रहा है, चलते हैं, बाय।